जय जगन्नाथ। वेलकम टू मेटसाई ओडिया। समस्त को आज सेशन को स्वागत। आशा करछि समस्ते बहुत भल भाव पढ़ापढ़ी करुवे आउ निजर प्रिपरेशन बोर्ड पाई भल भाव करुवे कारण आमर क्लास बहुत दिन है चली महामाराथन सीरीज मु ना देवाचंद सर के भी नहीं आसचु तो समस्ते ए क्लास को सीरियसली देखा हूँ आउ समस्ते क्लास को भल भाव पढ़ुव। पुणी थे समस्त कहि समस्ते लाइक कर दियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। मात्र 17 जन लाइव अछंती पिला अधिक रो अधिक प्लीज जॉइन करो। जय जगन्नाथ। पुणी थे समस्त आज क्लास को स्वागत। अधिक रो अधिक पिला जॉइन कले हमको बहुत खुशी लगे आमको एनकरेज हेबु आमे माने। तेणु अधिक रो अधिक पिला प्लीज जॉइन करो। सो दैट आम आमर जोटा लक्ष्य रही जमी आम अधिक रू अधिक पिला पाखे पहुँचे पार अधिक रू अधिक क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस हो पार। सो प्लीज जॉइन द क्लास, जॉइन द सेशन। यू ऑल वर जय बाबा की। पूजा साहब कहले जय बाबा की। थैंक यू पूजा। जय बाबा की। जय 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 बाबा की। जय 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 माता की। जय बाबा की। समस्त जय हो। जय राम, जय श्री श्याम, जय जगन्नाथ। 59 पिला हेले आउ पिला देखिबा केते जण आउ केते जण आछंदी। 59 बर्तन जाय हेले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पिला माने हमरो केमिकल काइनेटिक्स चली थिला। 59 स्टूडेंट हेले। आज रोहित शर्मा आउट हो गले बा चंदन ओके। तो 64 पिला हेले मात्र लाइक किंतु 37 टा अछि। आउ केते बेले लाइक आसीओ ना लाइक आसीबनी। दंडवत प्रणाम विकास महाप्रभु। जय जगन्नाथ। एन फैक्टर केमती कैलकुलेट करी होउची शुभश्री। एन फैक्टर हमरो नॉर्मलिटी और मोलारिटी को नेकी कैलकुलेट करा जाय शुभश्री। समस्ते शीघ्र शीघ्र जॉइन करो और शीघ्र शीघ्र समस्ते लाइक करो। अरे 48 लाइक कहीं 68 कहीं हेलानी। 68 पिला अच्छा टिके प्लीज लाइक कर दियो और शेयर कर दियो सो दैट आमको बहुत खुशी लगे। आज 7:30 बेले क्लास पिला माने कहीं मो प्रॉब्लम हुए मु लैब रु आसला बेले टिके लेट हो जाए। तेणु मत प्रॉब्लम हुए 7 बेले एक्जाक्टली क्लास नेला बेले मो सब बेले प्रॉब्लम हो पारे। तेणु 7:30 बेले किछि दिन एबे 2 दिन देवार्चन सर क्लास नहीं पारिबेनी। देवार्चन सर अनअवेलेबल इवनिंग आवर। तेणु मु क्लास नउची ठीक अच्छे। तेणु मत टिके मैनेज करियो पड़ियो। आसंता काली 7 रु 7:30 भितर ही क्लास स्टार्ट हबो। तेणु सॉरी फॉर दिस। झिल्ली तुमको पीटी पकेवी झिल्ली। डेली सो आपको हिंदी आता है? ऑब्वियसली हिंदी आ रहा है। बिना हिंदी कैसे बात करता हूँ। ओके तो आम देखा क्वेश्चन आमर देखा आमर रही कौन ना इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन गोटे आमर काइनेटिक्स चली काइनेटिक्स पर आम डीएफ को जीवा पिला माने ध्यान देके देख। काइनेटिक्स पर डीएफ को जीवा। काइनेटिक्स चलता काइनेटिक्स क्वेश्चन थिला ना इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 मोलार टू 0.4 मोलार इन 15 मिनट। what is the time taken for change in concentration from 0.1 molar to 0.025 molar? 0.1 molar to 0.025 molar concentration हबा पई केतिकी टाइम लागिबो? जदी टाइम टा तमरो 0.8 टू 0.4 हबा को 15 मिनिट लागुची। सो टाइम कोन देछि? टाइम कोन दियाइछि? टाइम दियाइछि हमर एटा की टाइम दियाइछि? हमर एटा टाइम दियाइछि 15 मिनिट। एटा की ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर। आउ कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन केते थिला? कंसंट्रेशन थिला 0.8 मोलार। 0.8 मोलार ओके। एंड देन हमर फाइनल कंसंट्रेशन केते हैला ना 0.4 मोलार। 0.4 मोलार हैला। तो टाइम होची 15 मिनिट। ए होची 0.8 मोलार। ए - x होची 0.4 मोलार। ताले केते सरीला? x होची केते
इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तो हाय हेलो छाड़ंतु, जय जगन्नाथ बोलंतु, पाठरे मन दियंतु। ठीक अछि। सो a माइनस x केते हबो ना 0.8 माइनस 0.4 केते हबो 0.4, ताले 0.8 माइनस 0.4 0.4 हबो। ये कौन सी चैप्टर है? डेली सो। ये हमारा काइनेटिक्स वाला चैप्टर है, डेली सो। ठीक है, हेगला 0.4 मोलार हेगला x रो वैल्यू। अच्छा, जीरो ऑर्डर रो फार्मूला कोन? k रो फार्मूला, जीरो ऑर्डर रो k रो फार्मूला कोन हबो ना k इज इक्वल टू x बाय t, x बाय t, x बाय t। x माने केते? x माने 0.4 केति की सॉरी ची 0.4 सॉरी ची। एडी rdx चिनु तम घर कोठी इप्सिता, ता घर ओडिशा भितरे, किंतु तम घर जोठी मु जाई तुमको बाड़ेबी। तेणु पाठ ऊपर फोकस कर चिनु बाबा, पाठ ऊपर फोकस कर, नले बोर्ड रे पस्तेइबो, सेडी आ लिखि परिबनी तम घर कोठी। प्लीज समस्त को रिक्वेस्ट, केही हेले अननेसेसरी चार्ट करवानी। आमे सेति की चार्ट करवा जेति की आम पई दरकार। अननेसेसरी चार्ट करिकी ना आमे निजर समय नष्ट करिवा, ना हमर टीचर को समय नष्ट करिवा, ना पिला माने को समय नष्ट करिवा। कारण देखो वर्तमान बोर्ड एग्जाम को बोर्ड एग्जाम भली नबाकू पड़िबो। आमे जदी बोर्ड एग्जाम को बोर्ड एग्जाम भली न नबा, आमे निश्चय हैरान रे पड़िबा। ठीक अछि। आ जो मानकर एग्जाम नाही से माने आसी क्लास रे जॉइन करो, बट प्लीज अन्य मान को हैरान करो नहीं, प्लीज मो तरफ रु अनुरोध हाथ जोड़ी की। ठीक अछि। मझिरे मजा करबा अलग कथा, किंतु अननेसेसरी मेसेज अननेसेसरी चैट करबा नहीं प्लीज। तो टी टाइम केते? टाइम होची हमर 15 मिनिट। सो x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू आसी गला 0.4 बाई 15, 0.4 बाई 15। तो एडा होची कहार फार्मूला ना जीरो ऑर्डर रो। पिला माने मन रखो, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट रो फार्मूला होची k नॉट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय t। x होची कोन ना केति के हमर कंसंट्रेशन चेंज हेची, बा केति की कंसंट्रेशन हमर डिक्रीज हेची बाय t। ठीक अछि। x divided by t, so k naught is equal to x divided by t। ओके, एटा होची जीरो ऑर्डर रो रेट कांस्टेंट रो फार्मूला। सो k naught is equal to x by t, ताले k naught is equal to x माने हमरो केति की मोल सरीची। x means your how many moles have been decreased, बा केति की मोल सरीची। सो we can say that the concentration that got decayed that got decayed केते सरीची, that is initial minus final, initial minus final। and t होची कोन? t होची टाइम, t होची हमरो टाइम। ठीक अछि। ताले याको हमें कन्वर्ट करले व्हाट इज द यूनिट ऑफ k नॉट? k नॉट रो यूनिट हबो जेतु 0.4 रो यूनिट होची मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। एडा जेतु टाइम मिनिट रो छी, तेनु मिनिट इनवर्स। बर्तन एडा k रो पळे आसिला, पिला माने एति की लिखि देले मार्क किंतु आसीबो नाही। हमहु कोन कहै छै एडी हिमरश्मि आंसर कहि देलेनी, बा हिमरश्मि हला। तो हमकु कोन कहबा, कोन एडे देखिबा को पड़िबो ना, हमकु एडे देखिबा को पड़िबो जे केते टाइम हमरो चेंज होबो, टाइम केते चेंज होबो, टाइम चेंज होबा को केते टाइम लागिबो। तो टाइम हमरो इनि कंसंट्रेशन आउ गोटे कंडीशन कहला जे कंसंट्रेशन 0.1 टू 0.025 मोलार। सो टाइम फॉर 0.1 मोलार टू 0.025 मोलार पई केते टाइम लागिबो, केते टाइम लागिबो? हां, रिएक्शन बसई देला, बर्तन रिएक्शन कर देला, किंतु एति की टाइम हबा को केते टाइम लागिबो बोली पचराइछि। तो हमको कोन करिया को पड़िबो? फार्मूला पकेबा को पड़िबो। ताले a केते? a होची 0.1 मोलार। एटा सेकंड कंडीशन पिला माने, एटा होची a माइनस x। ठीक अछि। ताले हमर फार्मूला पको, k नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 0.1, फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज 0.025, t हमको जाना नै बाय t पको। k नॉट रो वैल्यू केते? k नॉट रो वैल्यू होची 0.4 डिवाइडेड बाय 15, एंड this is equal to how much? That 0.075,
10 5 9 7 तापर 9 नहीं 075 yes 0.075 by t 0.07 by t हाय हेलो कहीं कथा हबनी जे कथा हब एथर बाटे देवी एक्चुअली डेली शो हम लोगों का क्लास होता है मॉर्निंग में 6 बजे मॉर्निंग 6 AM और इवनिंग 7 AM ठीक है मॉर्निंग 6 AM और इवनिंग 7 AM में क्लास होता है तुम जब मन करता है तब आ जाता है क्लास करने में सो 0.4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई कर ले 0.4 मल्टीप्लाइड बाय t which is equal to 0.075 multiplied by 15 okay then t is equal to 0.075 multiplied by 15 divided by 0.4 सॉरी 7 PM ये 7 PM में होता है लेकिन आज 7:30 में हो गया क्योंकि आज बेसिकली मैं लैब से रिटर्न करते करते बहुत लेट हो गया इसलिए ठीक है ओके सो व्हाट विल बी द आंसर कौन हम ना आम कटाकटी कले 75 × 15 डिवाइडेड बाय 0.4 15 पंजा 75 5 के 7 ने 15 7 15 75 5 के 7 ने 15 7 105 7 112 2 रखी 11 निहा 15 0 0 11 1.125 डिवाइडेड बाय 0.4 तो हरण करवा 4 हरण कले 4 2 × 8 32 4 32 4 1 4 ठीक अच्छे डिवाइडेड बाय 0.1 सो इट विल बी 2.81 की 2.81 हम कि पे मैंने यस 2.815 देखो सो इट विल बी 2.815 Thank you. 2.815. It will be 2.815. Is it clear to everyone or do you have any doubt? 2.8125. मैं further calculate कर लेनी. So it will be 2.81. It should be 2.81. ठीक है चेड़ा 2.81 होगा. Unit should be in minute. Unit should be in minute. Exactly. If you miss up the unit you can lose many marks so remember you should not miss the unit during the answer so ये हमारा आंसर अब कितने आंसर अब 2.815 मिनट ठीक अच्छे कि हेमरश्मि ठीक अच्छे कि नेक्स्ट व्हाट इज Arrhenius इक्वेशन इंटरप्ट द ग्राफ टू एक्सप्लेन Arrhenius इक्वेशन सो Arrhenius इक्वेशन टा क्यों Arrhenius इक्वेशन को तुमने एक्सप्लेन करो ग्राफ माध्यम रे जी एक्सप्लेन करियो ताको 3 मार्क जी एक्सप्लेन न करियो तो किसी मार्क नहीं आपको 0 मार्क ठीक है सो हाउ मेनी मार्क्स इट मे बी अराउंड 0.5 to 1 mark 0.5 basically 0.5 will be deducted if you miss up the unit okay तो यूनिट समस्त लिखा केबे भूलबनी तो गोटे क्वेश्चन कला पर पुणी थे रिव्यू करिवो ठीक अच्छे so what is Arrhenius equation Arrhenius equation is the Arrhenius equation is the equation Arrhenius equation is the equation which tells about the relationship between Arrhenius equation is the equation which tells about the relationship between Arrhenius equation is the equation which tells about the relationship between कहा भितर rate constant and temperature. Rate constant and temperature. Although rate constant और temperature पे हमारा गोटे थिला temperature coefficient ठीक अच्छे but we can say that rate constant and temperature as well as rate constant temperature and activation energy. Rate constant temperature and activation energy.
ओके जन को ब्लॉक करिया टाइम पळे आसले पिला माने टिके रुह ब्लॉक कर दवा हो गेट आउट So Arrhenius equation is the equation or the relationship we can also which tells about the relationship between rate constant, temperature and activation energy. Yes, real life story ben करा जाउची किंतु जेतु मु साइमल्टेनियसली दि आड करूची तेनो ए भलिया प्रॉब्लम होय. तो व्हाट इज k? So it is given by your expression that is k is equal to a means Arrhenius constant. K is equal to Arrhenius constant A multiplied by e to the power minus a by rt अच्छा minus a by rt. So what is k? हमको सब गुडा लिखे पड़ियो where k is equal to rate constant, where k is equal to rate constant, but remember this is quietly applicable for fast order reaction पे इटा बहुत applicable होता है as compared to zero order and second order. Zero order और second order रे ये equation टा exactly काम दिएनी but हुए applicable हुए but exactly काम दिएनी. What is a is equal to Arrhenius constant. A is equal to Arrhenius constant which is determined from the graph. Arrhenius constant which is determined from the graph. And what is EA? EA means activation energy. What do you mean by activation energy? Exam रे जति आसुनी तथापि जानी था activation energy is the extra amount of energy required to raise the reactant molecules up to the threshold energy. So reactant energy रो threshold energy आडको जीवा पई जति की एक्स्ट्रा एनर्जी दरकार सेटा को जीवा हमर एक्टिवेशन एनर्जी. ओके मौलिक हियर कहले सर रॉन्ग आंसर कोन होबो बाबा? करेक्ट आंसर कोन होबो कह? सुश्री को जगह रे बुझी पारनो को माने बुझा पड़नी एटा बहुत इजी. ताले बर्तन आर देखिबा आर माने कोन? आर माने होची हमर आर इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. And what is T? T is absolute temperature. को जगह रे बुझा पड़नी जो माने भी बुझी पारनो काइंडली लेट मी नो को जगह रे बुझा पड़नी. देखो आरएनएस इक्वेशन टा एटा तो इक्वेशन टा मन रखिया दरकार कोडा कोन जानिबा दरकार बस. आउ इथिरे न बुझिबा किछि नै. ग्राफ अलगा कथा बर्तन तो एतिकी न बुझिबार किछि असुविधा नै ना. तुमको कह जिवो जे पिला माने 2 गुणन 5 इज इक्वल टू 10 मते सर बुझांदो बोले हम कोन 2 5 थर गुणी की देखेबी. तो तेनु भाबुची आशा करछि समस्त को ए जगह रे विशेष असुविधा ही नथियो मन रखिबारे. बर्तन हमें ग्राफ करिया गले logarithm equations. Yes, sure, I will tell you why I am taking the logarithm equations. I am going to tell you why I am taking the logarithm equations. Wait. Now, in order to obtain the graph, हमको graph नबा गले we have to take the logarithm on both sides. Next, taking log on both sides. Taking log on both sides. Taking log on both sides.
आम जदि बोथ साइड रे आम जदि कौन नबा लॉग जदि नबा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग नेला माने हमर कौन हबो ना log k इज इक्वल टू हाउ मच एठी हमर logarithm ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस a बाय rt ठीक अछि so it will be log k is equal to how much it will be log a ठीक अछि log a plus log e to the power minus a by rt log a plus log e to the power minus a r by rt is it clear to everyone logarithm नबा तापर मु 2.303 सबुडारे लेफ्ट साइड राइट साइड मल्टीप्लाई कर दे सो 2.303 log k is equal to कितना हो ना 2.303 log a plus 2.303 log e to the power minus a by rt Arrhenius इक्वेशन रो डेरिवेशन तो नाही ठीक अछि एटा Arrhenius इक्वेशन हला Arrhenius इक्वेशन k अछि k पूर्व log नबा log of एतिकी माने कोन हबो एटे प्रोडक्ट फार्मूला पड़िबो ध्यान देकी देखो एटी हमर प्रोडक्ट फार्मूला पड़िबो a अछि e to the power minus a by rt अछि ठीक अछि e to the power minus a by rt अछि सो एटे दीटा जो रही छी ताले log a plus log e to the power minus a by rt तापर 2.303 दुई पटे मल्टीप्लाई कर देबा 2.303 दुई पटे हमें मल्टीप्लाई कर देबा ओके दुई पटे मल्टीप्लाई कर देले एटा कोन हिजो 2.303 log k दिस इज इक्वल टू 2.303 log a तुम कहबो सर 2.303 आपण काहे की मल्टीप्लाई करले कारण पिला माने 2.303 log माने कोन ln हिजबो ln e to the power minus a by rt जोटा कि हमर कोन हिजबो ना ln को e कटि जिवो ताहले एटा 2.303 log k is equal to 2.303 log a minus e by rt बर्तन हमें जिबा ग्राफ देखो फर्दर 2.303 को राइट साइड को आन देबा तारे log k डिवाइड कर दवा 2.303 डिवाइड कर देले एटा कोन जिवो 2.303 log a डिवाइडेड बाय 2.303 पुनी एटा कोन हिजो माइनस a बाय 2.303 rt फर्दर हमें आको आउट के सजै देबा कोन करबा आउट के सजै देले मु बहुत स्लोली स्टेप रे करछि log k इज इक्वल टू कोन हबो माइनस a बाय 2.303 rt plus log a एते गुडा को एग्जाम रे आसीबनी हमु केवल ग्राफ टा दरकार सो एटा होची ग्राफ ठीक अछि बर्तन हमें ग्राफ नबा ग्राफ जदि हमें नबा log k वर्सेस 1/t log k वर्सेस 1/t तो ग्राफ रे देखो इटा इट इज क्वाइट सिमिलर टू y इज इक्वल टू mx प्लस c y इज इक्वल टू mx प्लस c सो y माने कोटा log k mx माने m माने होची हमर -2.303 r आ x माने होची 1/t c होची log a सो हमें जदि गोटे ग्राफ नबा जदि हमें गोटे ग्राफ नबा कोन कोन log k वर्सेस 1/t कोन नबा log k versus 1/t if we plot a graph taking log k along y axis and 1/t along x axis we will get a straight line right we will get a straight line पिला माने जे गप करिवो कोन हबो मार्क कमिवो गप कमिले करिले मार्क कमिवो पाठ पढिले मार्क पढिवो यस डायरेक्ट तुम्हें माने जदि डेरिवेशन न करके डायरेक्ट लिखि परिबो भलो कथा आ जदि डायरेक्ट जदि कोन होची डायरेक्ट तुम्हें डेरिवेशन न करछो भी मार्क मिलबो कारण हमको ग्राफ को नहीं कि मतलब अछि सो log के पिला माने एडी गोटे ग्राफ रे ध्यान देकी देखिबा 1/t अछि आ हमर स्लोप ता नेगेटिव अछि ध्यान देकी देखो स्लोप ता नेगेटिव अछि
कारण स्लोप जदि आम देखा एम रैल्यू के स्लोप एम इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू के माइनस ए बै 2.303 आर आउ सी रैल्यू y इंटरसेप्ट के सी इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट बा सी केते वैल्यू आसीबो c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वैल्यू केते आसीबो ना log a। तो ए दीटारू आम जदि देखिबा शिवा पांडे सावधान कही दउछि एबे जो माने ए क्लास रे किछि भी स्लांग करिवो जदि 7 दिन भीतर तुम मोबाइल खराब हो जिवो बस जी भी स्लांग यूज करिवो बा कोनोसी क्लास भीतर डिस्टर्बेंस करिवो जदि 7 दिन भीतर मोबाइल खराब हो जिवो जे जोड़ी जाउ थाउ ना कहीं बेसी अभद्र गोटे अभद्र जो सीमा रेखा नहीं हसनी मु जेतिकी हसे सेतिकी रागे आउ रागर प्रभाव निजे अनुभव करिवो मु किछि कहया दरकार नहीं निजे कहबो। सो एडी हम जब देखिबा फर्दर ग्राफ को जदि हम देखिबा एई भले हबो सो एई जगह हम जब देखिबा दिस इज इक्वल टू log a किए गोटे कहूला सार आप केते ब्लॉक करेंगे अरे मु केते ब्लॉक करी कौन तुम मोबाइल देख 7 दिन भितर बा किछि दिन भितर जदि खराब न हो मते कहबो खराब कारण हमर प्रत्येक जिनिसर कर्मर फल निश्चय भोगिया को पड़े मु कहिछि पिला माने थरे कर्म रिफ्लेक्ट्स एवरीवेयर इफ यू डू ए गुड वर्क you will get a blessing and if you do a bad work you will get a curse whatever was in a new phone you might get disturbed remember so don't disturb the nature go flow with the nature okay please so log a होची हमर एडी कोन log a होची हमर y इंटरसेप्ट आउडी हमर एडी स्लोप होची स्लोप रो वैल्यू केते होची स्लोप होची हमर केते स्लोप इज इक्वल टू माइनस a by 2.303 r minus a by 2.303 r slope is equal to minus a by 2.303 r and y intercept is log a already लिखि दिछि so this is the graph अब हमको ग्राफिकली एटे एक्सप्लेन करिया को कहै छी कि जदी एक्सप्लेन करिया को कहै छी हमको एक्सप्लेन करिया को पड़िबो and interrupt the graph to explain Arrhenius equation interrupt करिया को कहै छी तो हमको एटे एक्सप्लेन करिया दरकार नै ठीक अछि okay so we need not to interrupt the graph we need not to explain what is the graph is it clear to everyone graph समस्त को बुझा पड़ला हाँ लास्ट क्लास में 46 नंबर क्वेश्चन कवर कर पार नथिले थैंक यू अंकिता थैंक यू वेरी मच we didn't could not cover the 46 number question thank you अंकिता thank you very much again हमर क्वेश्चन थिला डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी देखिबा किए कोन कोन जानि छ आंसर कहबो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर मींस द टोटल नंबर ऑफ reacting molecules the total number of reactant molecules which undergoes the total number of reactant molecules which undergoes the chemical reaction and whose concentration actually decreases एसपी बाबा हमर क्लास स्टार्ट हैला हेबार किछि समय हैला ठीक अछि सो हम कोन कहि परिबा ऑर्डर इज डिफाइंड एज द order is defined as the total number of reactant molecules whose concentration decreases in the rate equation or we can say also that the total number of power of the reactant molecules in the rate equation
तापर मॉलिक्युलरिटी कौन ना मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड एज एटा मिनिमम 4टा पॉइंट लिखिबो 2 मार्क बा 3 मार्क दिले 4टा पॉइंट निहाती लिखिबो मॉलिक्युलरिटी देखो समस्त पई मु लिखौची मुते मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ reactant molecules total number of reactant molecules present in the slow step of the reaction. Thank you Rudra Narayan. Molecularity refers to single step reaction and order refers to multiple step reaction, whole reaction. Wow. Order is determined experimentally and molecularity is determined theoretically. बहुत सुंदर आंसर रुद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आंसर रुद्र. Molecularity is defined for elementary reaction. Exactly. So बहुत सुंदर हिमरश्मि भी आंसर दी that मॉलिक्युलरिटी एटा स्पैम करो 2-3 थर स्पैम कले कोन मु जी भेले देखि परिबो बहुत सुंदर मॉलिक्युलरिटी इज अप्लाइड ओनली फॉर समस्त देखो के सुंदर आंसर दोचंदी मॉलिक्युलरिटी इज अप्लाइड फॉर which reaction elementary reaction that is single step reaction elementary reaction the different order is applied for all type of reaction Exactly, ठीक कहले गुरुचरण. Order can be zero or fraction, but molecularity cannot be. Order can be zero or fraction, but molecularity does not. Molecularity remember तमरो एग्जाम रे जदि डिस्टिंग्विश कहिथिबो जदि सेटा 3 मार्क रु अधिका थिबो तुमको स्टेप बाय स्टेप करके लिखिबा पड़िबो. Molecularity cannot be zero or fraction. Rate of the reaction is independent of molecularity and dependent on order. Exactly, ठीक उत्तर देचुंदे रुद्र, बहुत सुंदर, बढ़िया खुशी लाउची. So 1 2 3 हैला आ गोटे पॉइंट इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट इज डिटरमाइंड थियोरेटिकली. आउरी हमर पिला माने बहुत सुंदर आंसर देचंदी, बहुत गोटे पॉइंट दिया हिची, तुमे माने लिखि परिबो. इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. पिला माने आमे क्लास रे क्वेश्चन एथि पय प्रैक्टिस करूछु जेंति तमे सब गुडा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल को जाई परथिबो. And it is determined theoretically, and it is quite a revision class for those who have already solved many questions. Okay, और बहुत सारा क्वेश्चन order is derived from rate law of expression, and it is बहुत सारा एभला रहिछि. आमे आउ डिटेल्स रे न जाई के पुणी अथरे जिबा हमर क्वेश्चन को. तापर नेक्स्ट कैलकुलेट द activation energy of reaction whose rate at 300 Kelvin gets doubled for 10 degrees Celsius rise in temperature. कौन टेम्परेचर कौन हबो? टेम्परेचर कौन हबो ना राइज हबो केते ना 10 डिग्री सेल्सियस रे. तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करियो कहछि आ किछि डाटा देनी केमिति करिवा. हे प्रभु एते बड़ क्वेश्चन आंसर केमिति हबो देखिबा. तो T1 दे देछि केते 300 केल्विन, T2 दे देछि केते 310 केल्विन. पिला माने 10 डिग्री सेल्सियस राइज हवा जहा 10 केल्विन राइज हवा ता. ठीक अछि. पीडीएफ मिलेगा डेली. सो पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी. K1 केते K1 इज इक्वल टू K and K2 is equal to K कौन 2K. आसु वर्तमान हमर काइनेटिक्स चैप्टर चली आसु. देखो फिजिकल रो मु एबे चैप्टर कवर करछि. आपर इनऑर्गेनिक को जीबी माने फिजिकल सरू सरू इनऑर्गेनिक को जीबी. ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट सब चैप्टर सर कवर कर सालेनी देवरचंद सर.
ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट सब चैप्टर कवर कर सारे तापर सब चैप्टर कवर हो सारा पुणी आउ थे ऑर्गेनिक रो एमसीक्यू करी कारण ठीक अच्छे प्लीज पिला माने प्लीज कौन सी प्रकार अभद्रामी करनी हाँ तुम तुम भितर माने किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर पार कि अभद्रामी करनी प्लीज अभद्रामी करनी हाथ जोड़ी विनती कर अभद्रामी करनी भारी बाजे लगे आमको एगुड़ाक शुणा देखा भी तो आम जब देखा आरएनएस इक्वेशन अनुसार जब आम पकेबा आरएनएस इक्वेशन कौन थी ना k इज इक्वल टू a इंटू e टू पावर माइनस a बाई आर टी तापर लॉगरिथम नहीं लॉगरिथम देखिए भी कर दे परिबो लॉगरिथम अनुसार हमर जो देखिबा log a एभला है कि आसीबो सो log दीपट जदि हम नबा से अनुसार ln नहीं जाइथिबा सो ln k2 by k1 ln k2 डिवाइडेड ln k2 by k1 प्रथमे मु k2 नेली डिवाइडेड by k1 कोन हबो ना ln k2 by k1 ठीक अछि ln k2 डिवाइडेड by k1 आगे मु k2 by k1 कर दूची मु एटा फार्मूलाटा मोर भी मन नै k2 by k1 कर दूची सो एटा हबो e into e to the power minus a by rt2 मन पड़ला फार्मूलाटा a into e to the power minus a by rt1 जो माने फार्मूला जाननो से माने पई डेरिवेशन भी hi जाउची जो माने फार्मूला जानछ बहुत बढ़िया कथा ln नै जिबा ln k2 by k1 is equal to केते हबो a कैंसिल आउट e to the power minus a by r further rt2 plus a by rt1 then ln both side नबा ln both sides नेले ln को e कैंसिल आउट हो जिवो ताले k2 by k1 ln डाल राइट साइड को आसीबो तो राइट साइड को पळे आसले सॉरी log k2 by k1 राइट साइड को एडी आसले ठीक करो राइट साइड गेली 2.303 log आपको लिख दूची 2.33 log k2 by k1 which is equal to e to the power minus ea by r 1 by t2 minus 1 by t1 1 by t2 minus 1 by t1 फॉर्मेट रे लिखिबो भल लागियो देखियो ताले 2.33 लेफ्ट राइट साइड को पळेबो log k2 by k1 is equal to e तो कटि जाई छै हमर सॉरी e तो कटि जाई छै राइट minus EA by 2.303 R minus EA by 2.303 R 1 by T2 minus 1 by T1 okay so log K2 K2 रा वैल्यू केते K2 रा वैल्यू रही छै हमर K2 रा वैल्यू होची 2K K1 रा वैल्यू होची K so 2K by K बहुत सुंदर आंसर दे चने निकिस बढ़िया आंटीलॉग आसिले सेठी 10 टू द पावर करके रखि दबो अभिषेक चिन्मय प्रणाम माइनस ए बाय 2.303 आर रो वैल्यू हमको जदी दरकार तमे जूल रे नोच 8.314 नबो जब तुम केल्विन रे नोच 2 नेकी करबो तो सॉरी जब तुम कैलोरी रे नोच 2 करबो हम बेसिकली 2 को मु प्रेफर करे कारण इजी वे कैलकुलेशन करिया पे ठीक अछि तापर हम जिबा 1 by t2 मल्टीप्लाइड बाय 1 by t2 माने केते t2 होची हमर केते ना t2 होची हमर 310 माइनस 300 1 by 310 माइनस 1 by 300 माइनस टा आगु ऑलरेडी थिबो माइनस ये तो log 2k by 2 log 2 हे जिवो इज इक्वल टू माइनस ये बाय एटा केता हबो 2 into एटा हे जिवो 4.603 मल्टीप्लाइड बाय एटा 310 into 300 सो एटा हे जिवो -10 300 minus 310 -10 हे जिवो ताले ये log 2 is equal to log 2 रा वैल्यू पके दोची 0.3010 0.3010 पुनी 4.606 एगुडा सब तो आसीबो ये into 10 को एडे कटि जीवो कटि गले एटा केते हे जीवो ना ये डिवाइडेड बाय 31 into 300 ऊपर माइनस माइनस प्लस तळे 31 into 300 into 4.606 ताले ये केते हबो ये केते हबो ये सी 31 multiplied by 300 multiplied by 4.606 multiplied by 0.3010
सो आम या सल्व करने को पिला माने मु कैलकुलेटर नौची तुम चाहिए बिना कैलकुलेटर एग्जाम हॉल रे कर परिबो किंतु समय टिके पळेबो हो तो समय नेले एडे 53.694 किलो जूल आसिला ताले एडा हम मल्टीप्लाई करबा 31 इंटू 3 3 1 3 9 3 3 की 9 सॉरी 93 सो 3 1 3 3 3 की 9 93 मल्टीप्लाइड बाय 4.6 एटा मु कैलकुलेट कर देबी काइना बहुत समय पळेबो समय पळेले आउरी क्वेश्चन कोन नहीं परंदा सो मोटे कैलकुलेटर डायरेक्ट कैलकुलेटर मार दो छला सो 31 multiplied by 300 multiplied by 4.606 multiplied by 0.3010 is equal to 1 2 8 9 3 12893.57 कैलोरी किलो कैलोरी कन्वर्ट कले केता बा ना 12.893 किलो कैलोरी 12.893 किलो कैलोरी एटा कैलोरी रे एतिक आसिला अच्छा जदि कहबे सर मते कैलोरी दरकार नहीं मते जूल रे कोंदु नले मते अर्ग रे कोंदु अर्ग रे तो बेसिकली हमर क्वेश्चन रो बेसी आसेनी हमर जदि एटे कैलोरी को जूल रे कन्वर्ट करबा कैलोरी टू जूल रे कन्वर्ट करबा हमको मल्टीप्लाई करिया पड़ियो केते ना 4184 केते मल्टीप्लाई करिया पड़ियो 4184 so 1 calorie is equal to 4.184 so এটা কোন হই যাব না 12.893 multiplied by 4.184 किलो जूल एटा जूल रे कन्वर्ट कर देली मु कैलोरी को जूल रे गोटे कैलोरी एति की जूल ताले गोटे किलो कैलोरी एति की किलो जूल हबो सो एडे मल्टीप्लाई कर दोची मल्टीप्लाइड बाय 4.184 this is equal to 53946.72 किलो जूल सो तुम्हारा आंसर एति आसीबो सॉरी दिस इज इक्वल टू 53.946 किलो जूल तमे तो 53.53 आंसर आसले हला जथेष्ट इट इज एनफ 53.946 बा 53 पॉइंट समथिंग आसले चलिबो ओके 53 पॉइंट एति समथिंग आसले हिजिबो सोनू त्रिपाठी यस आमर मेडसाई ओडिया रो महामाराथन क्लास निहाती तमे सेति हमें क्वेश्चन ही करी करूछु हमें क्वेश्चन हमें सेति में प्रैक्टिस करूछु सो दैट तमरा क्वेश्चन ओरिएंटेड हे परिबो कांसेप्ट तो वर्ष द्वारा पढैछु पढै की आसीछु कांसेप्ट हमें टोटली जहा क्वेश्चन को धरि के हमें करूछु 54 भी हे जिवो 54 कले भी हे जिवो शायद यस यू आर राइट 54 ले भी हबो नेक्स्ट आछि गिव ए शॉर्ट नोट ऑन कोलिजन थ्योरी धक्का थ्योरी जे तम माइंड रे स्ट्राइक कला धक्का कला कोन धक्का हला जे मु आज मेडसाई ओडिया रे क्लास करबी आ भलो नंबर रखिबी आ बोर्ड रे बाप मांकर भलो नंबर रखी बाप मांकर सम्मान को रक्षा करबी गुरु गुरुजन मानकर आशीर्वाद नबो चाहची एई भला तम माइंड रे धक्का कला से गोटे कोलिजन ये भी गोटे कोलिजन ठीक अछि व्हाट्सएप रे पीडीएफ मिलिबनी हमर टेलीग्राम रे पीडीएफ मिलियो व्हाट्सएप रे एते जण कोन ग्रुप कोन खोली की बसतिबी पब्लिक ग्रुप कोन नाही कार डाटा क्वाडे कोन जीवो के रेस्पोंसिबल हो तेनु टेलीग्राम रे हमर अछि रेस्ट्रिक्टेड टेलीग्राम अछि ठीक अछि यू कैन फॉलो अप अस हमको व्हाट्सएप चैनल रे फॉलो अप करि परियो व्हाट्सएप चैनल रे डाटा ए डाटा पीडीएफ जाई परियोनी व्हाट्सएप चैनल रे मु आज टेलीग्राम लिंक पठे देबी व्हाट्सएप चैनल समस्त फॉलो अप करि परिबो मेडसाई ओडिया हमर व्हाट्सएप चैनल रही छी व्हाट्सएप चैनल रे फॉलो अप करि परिबो व्हाट्सएप चैनल बाद तुमे जदी जो माने चाहूच ए क्लास रो पीडीएफ नबा पई तुमे पीडीएफ हमर लिंक ऑलरेडी अछि डिस्क्रिप्शन रे तुमे देखिबो डिस्क्रिप्शन रे ऑलरेडी ए जो क्लास रो डिस्क्रिप्शन रे ऑलरेडी लिखाई सब देखिबो तुमे डिस्क्रिप्शन रे अछि गोटे देखो कोडला ना कि डिस्क्रिप्शन रे मोर रखिथि डिस्क्रिप्शन रे अच्छा जस्ट यू हैव टू सर्च ऑन टेलीग्राम दैट मेडसाई ओडिया 12th क्लास मेडसाई ओडिया 12th क्लास मेडसाई ओडिया सर्च करियो सीडी पाइ जबो ओके
तो आम देखा गिव ए शॉर्ट नोट ऑन कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी माने प्रथम कोलिजन थ्योरी 3 मार्क रो क्वेश्चन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क के आसुनी कि आसीबो नाही। तो याकू जदि हम देखा कोलिजन थ्योरी प्रथम कौन होची ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गुडाक कोलाइड करंती। सो फास्ट the reactant molecules collide themselves. Reactant molecules collide themselves. So reactant molecules collide themselves. Collide themselves in order to attain a minimum energy. In order to attain a minimum energy, that is threshold energy. In order to attain a minimum energy, to produce known as threshold energy, to produce the product. To produce the product. Very good. Molecule मानकर sufficient से extra energy थिबा दरकार. The extra energy required is known as the extra energy required is known as कौन एक्स्ट्रा एनर्जी जोड़ा हमको दरकार है की एनर्जी कह जिवो दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक अच्छे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पर आउ कौन जो मॉलिक्यूल गुडाक एक्टिवेट एक्टिवेट हो गला पर से प्रॉपर ओरिएंटेशन थिबा दरकार। सो ये तुम फॉर्मूला लिखि दे परिबो EA इज इक्वल टू 3-4 पॉइंट लिखिदेले हो गला। EA इज इक्वल टू E थ्रेशोल्ड माइनस ER। व्हाट इज E थ्रेशोल्ड? E थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी and ER is equal to reactant energy. PPS आमर ऑलरेडी चली किसी चैप्टर सरी आ किसी चैप्टर अच्छी। ठीक अच्छे ये गला फर्दर आम देखा जे मॉलिक्यूल गुडाक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता दरकार। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स must be oriented in proper orientation. तो मुझे पॉइंट बहुत गुटे शॉर्ट कर देली। ऑल मूवी चैनल स्मार्ट बोर्ड नहीं बाबा। स्मार्ट बोर्ड तो बहुत गुटे पैसा दरकार पड़े। मो पाखे स्मार्ट बोर्ड नापी पैसा ही नहीं तेणु नहीं पार्नी। सॉरी फॉर दिस। स्मार्ट बोर्ड पर पाखापाखि 1.5 लाख खर्च रही। ठीक अच्छे तो एत खर्च नहीं तेणु हो पार्नी। प्लीज पिला माने यही सब डिस्कस करनी। ठीक अच्छे द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ओरिएंटेड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन रे हवा दरकार। ओरिएंटेड रहितबा दरकार कोगुडा का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक अच्छे टू अटेन द प्रोडक्ट लाइक वी कैन से दैट इन इफ वी से दैट in case of SN2 reaction, in case of SN2 reaction मन अच्छी द अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होची ना अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल is attacking from the back side of the तो कहबे नहीं from the opposite side to the living group.
10 मिनिट गैप फॉर लंच हबनी बाबा सेटा डिनर हबो नीतीश सेटा डिनर हबो लंच हबनी डिनर हबो 5 मिनिट ब्रेक अरे आउ टिके पड़ दो मात्र घंटा एबे जाय हेनी प्लीज पिला माने घंटा हेनी एबे जाय ए पाठटा सर जाओ ए पाठटा सरी गेला परे 5 रु 10 मिनिट गैप दे प्लीज प्लीज ए पाठटा सार दो तापरे जिबा आउ टिके समय एटलीस्ट 8:45 हला प्लीज एबे प्लीज के गैप मागनी प्लीज तो ये आम फर्दर देखा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आम जब SN2 रिएक्शन तुम पढ़ी SN2 रिएक्शन रे कौन हुए SN2 रिएक्शन रे हमरो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रो तुमरो जो हमरो लिविंग ग्रुप लाइक X और वी कैन से क्लोरीन रो ऑपोजिट रे आसी OH लागि थिबो क्लोरीन रो ऑपोजिट रे आसी OH आसी अटैक करिवो OH अटैक्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड OH attacks from the opposite side. Okay, Himrasmi, I can understand you, but बुझी पारची किंतु समस्त को देखिया को पड़ियो. ठीक अच्छी तो आमर ये अनुसार प्रोडक्ट आसो सो बैक साइड अटैक हेले ही एटा प्रोडक्ट दबो आ प्रोडक्ट देके एटा कोन दबो हमर एज यूजुअल बैक साइड अटैक करिवो बैक साइड अटैक कले एटा बिलो द प्लेन हे जिवो आ लिविंग ग्रुप हमर क्लोरीन माइनस पळेबो मोडा को डेस्टा को भलो लिखि नित्यानंद बेहरा कहले सर डीपी केमिस्ट्री वर्सेस मेथ्स ओडिया कोथरु बेसी सिलेक्शन पढ़ा पाठ पढुची नित्यानंद सब ट्यूटर बहुत भलो ठीक अच्छे आम के विरुद्ध में मुझे कहूनी कहबिनी प्लीज क्या सहित कंपेयर करवानी सब ट्यूटर भल सब टीचर भल ठीक अच्छे पाठ आम पढ़ा पाठ पढ़ा को आम इम्पोर्टान्स आम जो पाठ पढ़ा आ भल नंबर रखा यहाँ हूँ आम मेन मोटो ठीक अच्छे ये बहुत बड़ा इंपोर्टाट रिएक्शन ये रिएक्शन बहुत थर आसी पिला माने ये क्वेश्चन बहुत थर आसी ठीक अच्छे prove that the time taken for completion of 99% of a fast order reaction is 10 times the half life. Okay, a question da बहुत important है very very important बहुत important ये क्वेश्चन बहुत थर आसी भले क्वेश्चन सो ये क्वेश्चन को जे हाथ छड़ा करथिबो माड खाइबो सत कथा आ कोन कहबी गाली करि परिबी आ किछ तो करि परिबी ना तेनो हाथ छड़ा करिवनी बहुत इजी क्वेश्चन सो हमर टू प्रूफ हमको टू प्रूफ कोन करिया पड़िबो ना T 99.9% T 99.9% is equal to 10 multiplied by T half. So हमें कौन करची कौन करिबा ना एडे क्वेश्चन T 99.9% जीवा for T 99.9% for T 99.9% हमारा A केते A minus X होची 99.9% of A एतिकी कंप्लीट हेची माने बॉडी केते आउ एतिकी कंप्लीट हेची हला बॉडी केते 0.1% 0.1% बॉडी सो 0.1% ऑफ ए तो हमरो T 99.9% पई बॉडी हमरो 0.1% हां हरिओम पानी गिरा यस तुमे क्वाड जाइतिलो हरिओम एते समय हला आसु नथिलो यस जसी हरिओम असला सो 0.1% हम मन रख ये बहुत पिला भूल कर दियंती ए जगहटा बोर्ड बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट पिला माने एठी डायरेक्ट 99.9% लिखि दियंती गोटे पिला कॉन्सेप्चुअली क्लियर थाए किंतु एठी हड़बड़ी रे गड़बड़ी कर दियंती ए गड़बड़ी जेंती न हो यूनिट छाड़ दियंती ए गड़बड़ी न हो सो 0.1% ऑफ ए 0.1% ऑफ ए हो इज इक्वल टू a minus x 0.1% ऑफ a इज a minus x ताल हमें केते लिखिबा 0.1% माने 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इनटू a 0.1 माने 1/10 so a by 1000 it is simply a by 1000 so a minus 6 is equal to a by 1000 is it clear a जदि हमरा 100 होची ये हबो 0.1 so a by 1000 नै जबा नेक्स्ट हमरा एठी कोन कैलकुलेट करबा ना प्रथम हम देखिबा k is equal to कोन फार्मूला k is equal to for फर्स्ट ऑर्डर मन रखो k रो फार्मूला 2.303 by t log a by a minus x
log a minus x आसंता काली मॉर्निंग रे से मॉर्निंग सकाळ 6टा बेले ही क्लास हबो ठीक अछि गोटी दिन मोर टिके देह खराब हला बोली ताको 7टा बेले करि देली अदरवाइज किछ असुविधा नै सो k रो वैल्यू जदि हम देखिबा 0.693 by t हाफ 0.693 by t हाफ एडा होची फार्मूला k रो तापरे 2.303 by t t हमको जाना नै t हमको कैलकुलेट करियार अछि t पके देली log a केते a होची a को a पकेली a - x केते ना a by 1000 a by 1000 कारण एतिकी बळीची सरीची 99.9% बळीची a by 1000 सो a will be cancelled out 0.693 को मु लिखि देबी 2.303 multiplied by log 2 multiplied by log 2 divided by t half हमर केते देइची t half देइची केते t half हमको जाना नै let it be t half only let it be t half further 2.303 divided by t एटा 99.9% लिखि दियो so it is t 99.9% log a by 1000 a cancel out so it will be log 10 to the power 3 it should be log 10 to the power 3 देखो पिला माने 2.303 लेफ्ट कटिला लेफ्ट लेट कटि गला कोथरे काटिबो छुरी बा पनिकी जोथरे काटच काट जदि छुरी पनिकी रे काटिलो हाथ कटिबार संभावना अछि तेनु ध्यान देकी काटिबो आहा श्री प्रेमानंद महाराज बोली के जन करछन राधे राधे आहा मते लागिला सतरे माने भगवत स्वरूप भगवान करे स्वरूप के जने आसी लेली बढ़िया हो ठीक अछि देखिबा log 2 divided by t half is equal to log 10 to the power 3 माने 3 log 10 माने 3 divided by t 99.9% so let multiply both sides after multiplying both sides I will explain Nitish please wait so multiplying माने criss cross multiply कले कोन हो log 2 रो वैल्यू होची 0.3010 so 0.3010 multiplied by t 99.9% divided is equal to t half multiplied by 3 log 10 माने into 3 log 10 माने into 3 then t 99.9% is equal to 0.3 multiplied by 0.3010 3 multiplied by 0.3010 multiplied by t half so 3 multiplied by 0.3010 कितने ना 0.9030 कोडे कोडे भूल हैला हां 10 टाइम्स थिला ना हाँ ये भूल हैला ये भूल कर देली बस 3 divided by हबो एटा 3 divided by 0.3010 sorry एटा divided हबो it will carry about 3 marks okay so 3 divided by 0.3010 this is equal to 9.999 something multiplied by t half कारण 0.3010 is nearly 1 by it is somehow nearly equal to 10 by 3 this is equal to 10 by 3 ठीक अछि t 99.9% so this is equal to nearly equal to t 99.9% is nearly equal to 10 multiplied by t half nearly equal to लिखिबो exactly जे लिखिथिबो सेडी बुझी जो जे टीचर एडी ये भूल लिखछि प्रूफ्ड इफ्सिता जय जगन्नाथ तो हमें पुणी आउथरे क्वेश्चन को देखिबा ए क्वेश्चन को पुणी आउथरे देखिबा आरंभ रो देखिबा पिला माने हमको प्रूफ करिवार अछि कोन प्रूफ करिवार अछि जे तुम्हारा we have to prove that t 99.9% is equal to 10 into t half okay and then amaro जेतु 99.9% सॉरी जी 99.9% amaro सॉरी जाईची बळीची आ केते बळीची amaro 0.1% बळीची 0.1% so 0.1% माने 0.1 divided by 100 multiplied by a so 0.1 by 100 होची 1 by 1000 so a by 1000 clear नेक्स्ट हमें पकेबा इडे k रो फार्मूला रे k रो फार्मूला रे पकाओ k रो फार्मूला होची कोन 2.303 by t log a divided by a minus x a minus x होची a by 1000 a को a कटिला 1000 log 10 to the power 3 माने 3 log 10 हे गेला ठीक अछि इट इज 3 log 10 हे गेला इटी 3 log 10 हे गेला इटा
आउ एटा 2.303 0.693 को भांगिले 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.30210 तो 2.303 कटि गला तापर एटा टी हाफ जिन सेमती एटा रहला तापर स्टेप रे हम जो देखिबा कोन हबो ना log 2 रो वैल्यू हमें जानचे 0.3010 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्रॉस कर दियो t 99.9% 3 log 10 होची 3 into t हाफ ठीक अछि तापरे फर्दर t 99.9% इज इक्वल टू केते हो 0.3010 राइट साइड को आसीबो 3 divided by something this is equal to 9.999 which is equal to nearly equal to 10 into t half कौन गोटे डाउट थिला नीतीश व्हाई वी मल्टीप्लाई ए कोठी हमें किछि त मल्टीप्लाई करने एटा फार्मूलाटा बाबा अच्छा a minus x is equal to this of a कारण एटे कहै छि जे इनिशियली जहा नै थिबो तार 99.9% सरी जीवो तो इनिशियली जदि 10 मोल नै थिबी तार 99% 9.9% सर जीवो जदि इनिशियली मु 50 मोल नै थिबी तार 99.9 मोल सर जीवो तो इनिशियली मु कोन कहली इनिशियली मु नै छि a मोल इनिशियली आई हैव टेकन a मोल बोली कि मु नै ताले हमर सरी छि जति कि बळि छि एति बुझियला a सेति में मल्टीप्लाई हबो नीतीश बुझियला इज इट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा ना कारा कोटी डाउट अछि okay is it clear to everyone or we have to focus again otherwise okay chalo same question prove that the time taken for 75% completion of a reaction is twice the half life period एडा मु बुझेबिनी किनु करी करी जीवी देखिबा मोड आगे के कर दोची so we have to prove t 75% is equal to 2 into t half formula टा मन रखि दबो बहुत उडे एमसीक्यू रे काम रे आसीबो t 75% is equal to 2 into t half now t for t 75% okay this is equal to t 75% is equal to how much it is that is for t 75% a minus x is equal to बॉलिची केते 25% so 25 by 100 into a this is equal to 25 100 a by 4 this is equal to a by 4 तापर फर्दर हमें सॉल्व करले k is equal to कोन ना 2.303 into log 2 माने 0.3010 divided by t half this is equal to how much this is equal to ना तुम्हारा 2.303 by t is equal to t 75% further log a by a minus x a is equal to a by minus x is equal to a by 4 you have to prove accordingly if you miss any step then you might get deducted by marks so remember so you can say right here k is equal to direct table लिखिला हो then further k will be cancel sorry 2.33 will be cancelled out and you will get which number that is 0.303 by t half 0.3010 divided by t half स्पीड रे करूची देखिबा कार फास्ट आछि 1 by t half t 75% log a की केतले जॉइन हैला करनी के केतले केतरा क्वेश्चन कला देखो जॉइन हैला के केतले खाइला के केतले सोइला पाडिला झाडा गला एई सब कथा ही होछ क्लास रे सो 0.3010 मल्टीप्लाइड बाय t 75% is equal to log 4 t half multiplied by log 4 means 2 log 2 log 4 means 2 log 2 let me rewrite this 0.3010 as log 2 let me rewrite this as log 2 this is log 2 log 4 means 2 log 2 so log 2 will be cancelled out log 2 will be cancelled out and you will get the right answer you will get the final answer that is equal to t 75% is equal to how much it is 2 multiplied by t half and my answer is gone completed I think everyone could understood जे समस्त बुझिथिबो आ हालो हाय खाइलो पीलो सोइलो पाइलो ई सब जे कहूची तार समय सेतरे ही दिबो ओके कंप्लीट ठीक अछि सुकन्या आगे सरी गला हो देख हो थैंक यू सुकन्या बढ़िया कांग्रेचुलेशन Next question, what do you mean by activation energy? The rate constant of the reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are this respectively. Calculate the activation energy for the reaction different threshold energy. हमको एटा बड़ क्वेश्चन एटा 3 मार्क या क्वेश्चन जदि हम क्वेश्चन को एनालिसिस करबा प्रथम क्वेश्चन रे एटा 1 मार्क
तापर क्वेश्चन आंसर करबा 2 मार्क पुणी आउथरे 1 मार्क 4 मार्क होची तो एडा 4 मार्क क्वेश्चन त हमर नाही हाफ टू हाफ तो दीडा डेफिनेशन करिया को हमें हाफ हाफ पाइबा आ क्वेश्चन को सॉल्व करिया को ये पाइबा काइंडली हस ओके ओके सो हमें देखिबा प्रथमे एक्टिवेशन एनर्जी द व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी activation energy the extra energy required to raise the reactant molecules so the extra energy required to raise the reactant molecules up to threshold energy for product पिला मैंने देखी थी मोर सब थर डेफिनेशन अलग अलग ही था तो मु निज अनुसार निज भाषा लिखा है यस कोलिजन थ्योरी लास्ट पॉइंट द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अप टू थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर गिविंग प्रोडक्ट तो जति के एक्स्ट्रा एनर्जी दरकार सेटा को हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी कहू एक्टिवेशन एनर्जी कहू ऑलरेडी एटा मु लिखी छी यार फार्मूला अनुसार लिखि दबो कोन ना ई इज इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड माइनस ई आर रिएक्टेंट एनर्जी कारण आर ग्राफ आसेनी एग्जाम रे ग्राफ आसीबोनी डोंट वरी सो ग्राफ को हमें फोकस करनु ताबरे व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एटा आसी पारे नो आसी पारे बोली किछि कहि होबनी श्री प्रेमानंद महाराज कहले खाना खाता हुए पढ़ाई करो खाना खाते हुए पढ़ाई करो ओके एमती तुम नाटा कहीं रखिच नो वन इज लाइक यू ए दीपक ज्योति हु इज लाइक मी नथिंग इज लाइक यू मा एवरीवन हैज देयर यूनिकनेस so no one is like you everyone has their uniqueness in themselves chad mu ti goppa mar deli othre yes you are right the extra energy required the molecule to cross the energy barrier is known as activation energy next what is threshold energy is this is the threshold energy is kono minimum energy this is the minimum energy एतिकी minimum energy दरकार the minimum energy required this is the minimum energy required to produce product दबा को minimum केतिकी energy दरकार माने ताडो अधिक हेले चलियो किन ताडो कम हेला होबो नाही सेडा कोन को जीवो कौन से थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम केतिक एनर्जी दरकार से थ्रेशोल्ड दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट गोटे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करिया प्रोडक्ट दबा केतिकी मिनिमम दरकार सेटा कहबा हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी तो तीनटा एनर्जी डिस्कस कली मु थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन और रिएक्टेंट होची सपोज समस्तंकर एवरेज एनर्जी होची रिएक्टेंट एनर्जी सपोज समस्तंकर एवरेज एनर्जी थिला 10 किलो जूल मिनिमम 25 हेले ही तमे एंट्री कर परियो रिएक्टेंट रे तो आ 15 जूल जो 15 जूल दरकार सेटा कहबो एक्टिवेशन एनर्जी आ केतिकी दरकार सेटा होची एक्टिवेशन होची 15 किलो जूल आ 25 हेले ही तमे रिएक्शन कर परियो नहले रिएक्शन हबो नाही जेमिति हमें कहि परिबा जे तमे नंदनकानन जीवो सपोज ए क्वेश्चन को बुझिया गले मो एटा को बुझिया गले सबले तो नंदनकानन दे दिन पळेला एबे नंदनकानन देखि नाही समस्त रामदोली गोटे मीना बाजार को जाइछन्ती मीना बाजार रे सांग सपोज अछन्ती के सुकन्या अंशिका हिमरश्मि पूजाराणी और रुद्र एतिकी पिला अछन्ती
अंशिका जो जो पिला चार्ट करथिले समान ना लिखिदेली सपोज एति पिला जाइछन्ती एति पिला जाइछन्ती सांग होइकी जाइछन्ती कुआडे मीना बजार जाइछन्ती दोली खेलिछन्ती दोली खेलिया गले राम दोली खेलिले रुद्र पाखे सपोज अच्छी 10 टंका आ पाखे अच्छी 20 टंका आ पाखे अच्छी नहीं एते कम टंका धरिकी आजिकल किए जाऊनी आउट गोटे शून पकई दियो 100 टंका सुकन्या पाखे 200 टंका या पाखे 150 टंका हिमरश्मि पाखे 300 टंका पूजा पाखे अच्छी 50 टंका तो एवरेजली जदि हम देखा एवरेज एनर्जी मानवर केते हम एवरेजली मिसे दियो 100 200 300 300 600 600 200 800 800 डिवाइडेड बाय हमर 5 जन अछि 1 2 3 4 5 5 जन हेले जन जन को एवरेज हेले केते हला एवरेज जन जन को ले केते हला 800 बाय 5 200 पड़ला नहीं 100 केते पड़ला 160 150 750 16 16 85 राइट एवरेज एनर्जी है ताले 160 सो आमे कहि परिबा जे एडा होची रुद्रर पैसा एडा सुकन्यार एडा अंशिकार एडा हिमरश्मिर एडा पूजार किंतु एवरेजली जो देखिबा मानकर एवरेज होची हमर रिएक्टेंट पिला माने एडा बहुत इंपोर्टेंट सेति में मोय पॉइंट को बुझौची सो एवरेज एनर्जी होची 160 किलो जूल किंतु रामदोली रे बसिबा गले जन को टिकट केते दरकार रामदोली रे बसिया गले जन को पिछा टिकट होची केते ना जन को पिछा टिकट होची 200 टंका तो 200 किलो जूल 200 टंका बोलिकी धरी नि जाउछि तो रामदोली रे बसिया गले 200 टंका नहले रामदोली रे बसि परिबो ना रामदोली समस्त जानिछो ठीक अछि तो एई भितरु कौन हैला एई भितरु जे जारा बेस्ट फ्रेंड सी तार पैसा मागी धरी पळेला सपोज पु रुद्र हिमरश्मि देखले रुद्र पाखरे 100 टंका अछि हिमरश्मि 300 टंका अछि तांग भितर एक्सचेंज कर देले तो भाग बांटी की ये यार 200 है यार भी 200 है ठीक अच्छे तो दी जन कोलाइड कर देले रुद्र और हिमरश्मि कोलाइड कर दे तांग भितर पैसा भाग बंटा है एपटे जे सुकन्या अंशिका ए दिन जन भाग बांटी देले 350 कहले नाई आम गोटे काम करवा हबनी आम पूजा सहित 3 जन मिसी गले पूजा को कहले मां तोर तो कम अछि तू कौन जीवु तू रही जा कही ताकू नेलेनी सुकन्या जिमसेंदी सुकन्यार तो पैसा थिला ताको कोलाइड करियो पड़लानी सॉरी सुकन्या को कोलाइड करिया को पड़िलानी कारण तार ऑलरेडी पैसा थिला से 200 टका तार अछि तेणु से कोलाइड कलानी किंतु अंशिका चालाक पूजा से तो कोलाइड कला आ पूजा कहला तोर तो 50 टका जी तू कौन जीवु मु पळोची तू रही जा तो अंशिका पड़िला अब पूजा रही समस्त फोटो नेला ठीक अछि तो 4 जन गले प्रोडक्ट देले तो ए 4 जन कौन है प्रोडक्ट है तो 200 किलो जूल हूँ मिनिमम हेल्ले जड़े जड़े ऑन एंड एवरेज जन जन केते पड़िला ऑन एंड एवरेज जन जन पड़ला 40 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी ए 40 किलो जूल हूँ एक्टिवेशन एनर्जी एटा हूँ हमर थ्रेशोल्ड एनर्जी तापर एटा हूँ रिएक्टेंट एनर्जी बुझीगला इज इट क्लियर समस्त में बुझा पड़ला ओके मैं इरेज कर दूसरी ओके कहीं पीडीएफ रे इटा पढ़ेले गला बुझी पिला कहे भाई आई जो पिला पीडीएफ पढ़ो सी कौन कह सब कौन बुझीगला ना समस्त को बुझा पड़े यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पिला माने बेसिकली यहाँ बुझा बहुत इंपोर्टेंट मुझे जिते पर्यंत एटा को बहुत सारा ये है टाइम लगे तापरे नेक्स्ट टाइम देखा एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड गला तापर हमर क्वेश्चन अछि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट 500 केल्विन 7 केल्विन रे 0.025 आउट 0.075 सो टिके माइंड फ्रेश हे गला आई थिंक समस्त हमर माइंड फ्रेश हे गला टिके सो 500 केल्विन 700 केल्विन T1 इज 500 केल्विन given T1 is 500 Kelvin, T2 is 700 Kelvin. T2 is 700 Kelvin. T1 is 500 Kelvin and T2 is 700 Kelvin. And further, how can reach data? Our data reach amara K1 is equal to 0.025 second inverse K2 is equal to 0.075 second inverse मैं ऑलरेडी कही थी एगुड़ाक बेसिकली फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पे एप्लीकेबल प्राय तो ये सेकेंड इनवर्स है ठीक अच्छे
ताहले फर्दर हम जो देखिबा फॉर्मूला अनुसार कौन ना log k2 by k1 log k2 by k1 इज इक्वल टू कौन फॉर्मूला थिला ना EA by माइनस EA by 2.303 r ऑलरेडी एटा डिराइव कर देछि तेनु मा याको आउ लेखु नै 1 by t2 minus 1 by t1 1 by t2 minus 1 by t1 ए पिला माने आउ नो गप नै प्लीज गप समय रे गप पाठ समय रे पाठ गप समय रे पाठ पढ़िले चलिबो किंतु पाठ समय रे गप कले चलिबो नाही log k2 by k1 0.075 divided by 0.025 so एटा को मल्टीप्लाई करले 3 हबो माइनस a by 2.303 मल्टीप्लाइड by r r केते हमरो r रो वैल्यू होची हमरो तुमे 2 नै परिबो कैलकुलेटर पई 1 by t2 700 minus 1 by t1 500 so किलोजूल रे हिमरश्मि कहि देलेनी वाव किलोजूल रे ऑलरेडी हिमरश्मि कहि सलेनी हिमरश्मि log 3 रो वैल्यू होची 0.477 minus a by 4.606 multiplied by 700 by 500 so एटा केते जो 7 पंचा 35 1 2 3 4 500 minus 700 so minus 200 ओके by 2 दीडा शून्य कटि गेला ताले 2 by 3500 सॉल्व करि चालो log 3 रा वैल्यू केते log 3 रा वैल्यू होची 0.477 जी अजथा मेसेज करछि ता सत्य कथा पाखर जांदो दिन प्लीज अजथा केही मेसेज करिवो नै चिंटू स्वाई मु बुझी पारछि तुमरो किछि खराब इंदाजा अछि प्लीज डू नॉट मेसेज लाइक दिस मु तो वार्निंग आउ काहा को ब्लॉक करबिनी क्लास रे लास्ट कहि देबी कहि तो देछि सो केही मेसेज करो नै अननेसेसरी 0.477 is equal to minus a by 4.606 multiplied by minus 2 by minus 2 को minus 2 cancel हो so 2 divided by 3500 2 divided by 3500 होची ठीक अछि so this will be how much this is equal to EA is equal to yes नरसिंह सर ब्लॉक कर देले मु जानि पाले थैंक यू गुरुचरण so 0.477 multiplied by 4.606 multiplied by 3500 थैंक यू नरसिंह सर को हमें समस्त धन्यवाद देबा नरसिंह सर हम क्लास पछर रही कि हम माने को पई एते सुविधा कर दोचंती आ क्लास जे जेमदी डिस्टरबेंस न क्रिएट हो सेत में हम पई ध्यान दोचन थैंक यू नरसिंह सर so ये by 4.606 multiplied by 2 by ठीक ठाक अछि ना कोड भूल हे गेला देखिलो कैलकुलेशन रे एबे टिके मु कैलकुलेशन ला पके दोछि कैलकुलेशन पे मिला मन मु कैलकुलेटर यूज करछि हमहु दुखर से तो कहया पड़छि कैलकुलेटर बिना कैलकुलेटर तो करि होनी ठीक अछि 0.477 multiplied by 4.606 multiplied by 3500 divided by 2 call it 3844 so it will be 3.844 kilocalorie so it will be 3.844 kilocalorie calorie को मैं डायरेक्ट किलो कैलोरी कन्वर्ट करूँ 3844.85 कैलोरी so E is equal to this one ताको फर्दर जूल रे कन्वर्ट कले 3.84 multiplied by 844 multiplied by जो देखिबा आको जूल रे कन्वर्ट करिया ना जूल रे कन्वर्ट करले ऑलरेडी कहि छि मु 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 सो इट विल बी 4.184 सबले किलो कैलोरी को जूल रे कन्वर्ट करिया दरकार नहीं किन जेतु हिमरश्मि करिसंदी हिमरश्मि तो तंका आंसर को हमें जूल रे देखिबा पय एडा करछु 4.184 so it will be 16.086 so it will be 16.086 एतिके आछि के आंसर हिमरश्मि 16.086 आछि कि ना तमर भूल अछि ना हमर भूल अछि ना दी जन जगह ठीक अछि चिके चेक कर दवा यस 15.99 आछि अच्छा
16.086 15.99 yes calculation 15.999 16.088 16 15.99 ଏତିକି ଆସିଲେ ଚଳିବ ଠିକ ଅଛି 15.99 16.08 ଯାହା ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ 15.9 to 16.0 ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟଡି 9ଟା ହେଇଯାଉ 9ଟା ବେଳୁ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ପ୍ଲିଜ୍ 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 ହେଲା ତ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଏନର୍ଜି ଆମର ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଏନର୍ଜି ତ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ମାର୍କ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ତ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କିଂ ଅଛି ହାଫ୍ ହାଫ୍ 2 କାରଣ ଏଇଟା 3 ମାର୍କ ଅଛି क्वेश्चनଟା नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर मोलिकुलरिटी और केते गुडा क्वेश्चन अछि पिला माने देखो एटलीस्ट 60 61 क्वेश्चन जाय जिबा प्लीज 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 61 नंबर क्वेश्चन जाय जिबा सुदीप्त मोर ब्लर देखा जाउची सुदीप्त आर यू श्योर my screen is looking blur but I can find it is quite good from my phone मु देखुची मोर स्क्रीन रे किंतु ठीक ठाक अछि मोर ये जोगेश्वर तमर +2 स्कोर जोगेश्वर एतिकी मु कहबी +2 स्कोर जेतिकी थिला +2 स्कोर अनुसार मते भलो गोटे जगह रे +3 करिया को सुयोग मिली पाला +2 पई आ मोर 10th रे भलो थिबार ही +2 हेतिला आ +3 परे भलो माने सुयोग मिलियार मु पीजी कर पाली पीजी पर एमफिल कर पाली एमफिल पर पीएचडी कर पाली तो मने रखिताओ जेते जण भलो भलो ट्यूटर अछंदी जो माने हमर प्लेटफॉर्म रे से माने निहाती +2 +3 तांगर लोअर लेवल रे बहुत भलो स्कोर करछन सो प्लीज आ किछि कहबी नमस्कार माय सेल्फ कहि समस्त देखिबा द आइसोटोप K42 हैज अ लाइफ टाइम ऑफ अबाउट 12 आवर्स सो लाइफ हाफ लाइफ कते अछि टी हाफ अछि 12 घंटा पर सी तार अधा जीवन सार दब अधा जीवन तार सार दब 15.97 yes सुकन्या यू आर राइट विदाउट कैलकुलेटर रे भी कले टाइम एग्जाम रे हां एग्जाम हॉल रे एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन सब लास्ट रे करियो मन रखता कारण एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन गोटे थाए आउ हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो क्वेश्चन थाए जे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसेनी से गुडा जोटा हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो केसी वाला क्वेश्चन से गुडा आसेनी किंतु एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग तेनु ध्यान देकी एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन को पूरा लास्ट रे रखिबो पूरा लास्ट तापई जागा छाड़ दबो लास्ट को लिखिबो टाइम दबो लास्ट को आराम से बस बसी करिवो टी हाफ इज इक्वल टू 12 आवर हाउ मेनी कंसंट्रेशन व्हाट फ्रैक्शन विल रिमेन आफ्टर 48 आवर्स सो टी इज इक्वल टू 48 आवर दिएछ ए क्वेश्चन टा को पिला माने दीटा वेराइटी रे करि परिबा गोटे शॉर्टकट आउट होची लॉन्ग कट शॉर्टकट मु लास्ट क्लास रे लॉन्ग कट शॉर्टकट बतैथिली दैट टी बाय टी हाफ इज इक्वल टू n टी बाय टी हाफ इज इक्वल टू n ताले टी होची केते 48 टी हाफ होची 12 48 बाय 12 होची 4 सो n फैक्टर हमरो 4 आसी गला n फैक्टर होची 4 क्लियर n फैक्टर हमरो 4 आसी गला लास्ट क्लास रे पढैथिली a by a minus x लास्ट क्लास माने गतकाली संध्या रे नो गतकाली सकाळी मु पढैथिली a by a minus x is equal to 2 to the power n ताले 2 to the power n माने 2 to the power 4 so a by a minus x is equal to 2 to the power 4 माने 2 to the power 4 माने 16 so a by a minus x is equal to 16 ताले a minus x by a केता हो 1 by 16 अब उल्टी वाले कारण एटा 16 divided by 1 ताले a minus x is equal to 1 by 16 into a so what fraction of a will be remained after 48 hours the fraction of a remained after 48 hours is 1 by 16 so therefore the fraction of a remained after कहते 48 minutes 48 hours right sorry 48 hours is 1 by 16 okay already हमरो इनऑर्गेनिक आसंदा काली टू शुभम स्टार्ट हबो आज काइनेटिक्स सरले मु इनऑर्गेनिक को जिबे इनऑर्गेनिक पे ऑलरेडी रेडी हे गई अछि अच्छा एटा ऑलरेडी पढे दिछि ऑर्डर इन मोलिकुलरिटी सो ए क्वेश्चन को स्किप कर दोछि
नेक्स्ट क्वेश्चन बुझीला लास्ट क्वेश्चन समस्त को ना कार को डाउट रहिले पचारिबो सेटा शॉर्टकट रे कली लॉन्ग कट रे कले से बळा क्वेश्चन टाइम टेकिंग मन रख हाफ लाइफ जो देछि ताले हमको जदी पचराइछि टी देछि आउट टाइम देछि आ केते परसेंट केते फ्रैक्शन रहइबो से अनुसार हमें करिवो ए फार्मूलाटा नुआ यस ए फार्मूलाटा नुआ थिला सुकन्या सेटा पर्टिकुलरली से भलिया क्वेश्चन जेते बेले तमरो देखिबो टी हाफ आ टी छिडु थिबो माने टी हाफ को टी छिडु थिबो से भलिया क्वेश्चन को करि परिबो जेते बेले ये रहिथिबो सकाळे केतळ क्लास होची सकाळे आयुष सकाळे 6टा बेले क्लास होची आयुष सकाळे 6टा बेले क्लास होची 9टा हे गला गोलू कहले ब्रेक आ मु कहली बा 60 क्वेश्चन 60 नंबर जाय पळेबा कोन कहउछ 60 नंबर प्लीज 61 टा क्वेश्चन अछि 61 जाय लॉन्ग टा पर करिवा 61 जाय प्लीज 61 जाय गैप रखिवा प्लीज प्लीज एमसीक्यू हबस स्मृति रंजन डोंट वरी. So a fast order reaction takes 69.3 minutes for 50% completion. A fast order reaction takes 69.3 minutes for 50% completion. So amara T half होची केते 69.3 minute. Please please ब्रेक दबा दबा न देले भल लागियोनी समस्त खाइबे आ पर ही सरियो 61 नंबर क्वेश्चन परडो हमर ब्रेक अछि. प्लीज ब्रेक दबा आ टिके पर 9टा बेले तो खाइबा 9:15 जाए ये करिया 9:15 मिनिट पर ब्रेक देबी 15 मिनिट बा 61 नंबर क्वेश्चन जोटा आगे आसीबो सेते बेले ब्रेक मिलिबो ठीक अछि. टी हाफ होची 69.3 मिनिट हमको पचराइछि टी 80% केते टी 80% केते हबो पचराइछि सॉल्व कले कोन हबो सॉल्व कले कोन हबो ना सॉल्व कले हमर जो देखिबा टी 80% हमको पतराइछि ताले 80% फॉर टी 80% फॉर टी 80% a minus x is equal to केते हबो ना 20% of a 20% of a 20% of a माने केते this is equal to 20 divided by 100 of a so 2 by 10 that is a by 5 so it is a by 5 आसीबो पिला माने आगो क्वेश्चन ए क्वेश्चन से भलिया पैटर्न रे करथिले था किंतु आगो क्वेश्चन को ए क्वेश्चन ताल मेल खाउनी काहे कि आगो क्वेश्चन रे टाइम पचरे टाइम दिथिला हमको केते परसेंट बढिथियो कहितला एडी सेडा कर देले हे परिबो हाफ लाइफ रो किंतु एडी टाइम पचरा हिची केते सरीबो देइची से अनुसार जदि हम देखिबा से अनुसार जदि हम देखिबा कोन फार्मूला ना k is equal to 2.003 by t 80% a by a minus x a divided by a minus x so k माने केते k माने होची हमरो 2.303 log 2 2.33 multiplied by log 2 माने 0.3010 divided by t half is equal to हमरो 0.693 right 69.3 so it is 69.3 minutes okay 2.303 by t 80% multiplied by a minus x a by a minus x a divided by log इधर रहइबो logarithm of a divided by a minus x होची a by 5 so log 5 हो एटा ताले एटा 0.693 divided by 69.3 तो सॉल्व कले ऊपर 0.1 तले जे ऊपर 0.001 तले 0.1 693 रे मु काटी देली 693 रे काटले ऊपर 0.001 तले 0.1 एटा केता हो 2.303 by t 80% into log 5 रो वैल्यू केते log 5 रो वैल्यू होची 0.699 बा 0.7 पकेले हला अच्छा पके देली ताले एठी सॉल्व कले 0.1 0.1
मन रख log 2 रो वैल्यू होची 0.3010 देई नथिबो सबोले log 3 रो वैल्यू होची 0.477 देई थाई पारे न देई थाई पारे log 5 रो वैल्यू होची 0.699 बा 0.7 देई थाई पारे न देई थाई पारे सो बी केयरफुल 10 to the power minus 3 by 10 to the power minus 1, so it will be 10 to the power minus 2. So it is 0.01 is equal to 0.01 cross multiply कर दिया multiplied by t 80% is equal to 2.303 multiplied by 0.7. So 7 3 21 1 रखी 2 न्या 2 7 3 21 1 रखी 2 न्या 7 2 14 16 so 16.121 आसला हमरो आउ हेमरश्मिंगर 160 मिनिट आसला 160 मिनिट इज द राइट सो t 80% is equal to how much 16.121 divided by 0.01 माने 100 मल्टीप्लाई हबो कोड मोर भूल हेला एटा भूल हेला एटा 1.6121 sorry I would have a 1.6121 तो एटा ऊपर पळेले एटा 1.6121 multiplied by 100 कारण 0.101 ऊपर पळेले 1000 100 हिजबो केमिति ना 0.01 टा केते 1 by 100 ना सो ऊपर पळेले into 100 हिजबो into 100 हेले एटा कोन हिजबो ना 100 दीटा डेसिमल सो 161.21 मिनिट सो 161.21 मिनिट हमर एतिक लिखतले हेला t 80% is equal to this one bracket रे आंसर सॉरी बॉक्स कर दियो फाइनल आंसर को एभलिया ब्रैकेट देकी आंसर लिखिबा बॉक्स करिया द्वारा गोटे भलो टाइम भलो सुचै थाए जे टीचर बुझिबे जे पिला फाइनल रिजल्ट पाखरे पहुंचला आ 9 मिनिट प्रज्ञा राउत आ 9 मिनिट कहै छी तो 9:15 बा 61 टा क्वेश्चन जोडा आगो हला सेटा क्वेश्चन रहिछि द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस कलर एक्टिवेशन एनर्जी पुनी अथर क्वेश्चन रहिछि गिवन द रेट कांस्टेंट of the reaction is this one at 100 degree celsius so t1 देछि 50 degree celsius t2 देछि हमरा 100 degree celsius केल्विन रे कन्वर्ट कर दबा केल्विन रे कन्वर्ट करले 50 plus 273 50 plus 273 केल्विन ताले एटा केते हबो 3 7 5 12 2 1 2 3 323 केल्विन एटा केते हबो ना 303 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस रे 273 मिसे दबो 303 केल्विन 0.16 हमें नो ठीक अछि ताले k1 केते 1.5 into 10 to the power 7 second inverse k2 केते 4.5 into 10 to the power 7 second inverse सॉल्व करी चलो माडी चलो ठीक अछि क्वेश्चन करी चलो आ हमर एटे फार्मूला आंसर log k2 by k1 is equal to minus EA divided by 2.303 R multiplied by 1 by T2 minus 1 by T1 एई गला तापरे log k2 माने केते 4.5 into 10 to the power 7 k1 केते 1.5 into 10 to the power 7 is equal to minus EA by 2.303 multiplied by R माने वैल्यू होची 2 further 1 by t2 माने केते 303 t1 माने केते 323 हला सॉल्व एडा कैलकुलेशन कर 3 पळै थिबो 10 सॉरी कटा कटी हे गला 1.4.5 को 1.5 रे काटिले 3 log 3 माने 0.477 is equal to minus EA divided by 4.606 multiplied by 303 जाओ चार्ट पूरा बंद हेला के समय पय 323 तो एटा 323 minus 303 भूल कर देली 1 by t2 होची 323 t1 होची 303 छोटा माइनस एटा 323 तोरी हो राइट 323 तोरी हो भूल हेला
373 केल्विन इट शुड बी 373 केल्विन मिसांडा भूल जाता हड़बड़ी में गड़बड़ी लेकिन तुम लोग मत करना ऐसे करोगे तो पछताओगे तो हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना तो इट शुड बी 373 373 373 then what will be the answer this is EA by 4.606 minus EA multiplied by minus it is 323 thila na sir 73 minus sorry for the 303 minus 70 divided by 303 multiplied by 373 so it value amara left side re kete rahichi 0.477 kon au ki chart karu nahanti tale 0.477 multiplied by 4.606 multiplied by 303 multiplied by 373 divided by 70 ओ मोर चार्ट मझे बंद होता यूट्यूब रे गोटे नुआ ऑप्शन अच्छी ना माने तुम जदि लाइव क्लास रे थी जदि हाथ न दो सी ये बंद हो कि समय पर ऑटोमेटिकली चार्ट है देखनी वीडियो चलो कि चार्ट देखनी आउ कि समय पर वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो यूट्यूब रे गोटे फैसिलिटी देछि रोबोटिक सिस्टम आग नथिला एबे से वाला सिस्टम आछि से मु देखिली जे प्रोडक्ट माने किछि चार्ट आसु नथिला बोली ओके टैलेंटेड तृप्ति कहले सर 323 हबो बोधे यस यू आर राइट 323 हबो थैंक यू तृप्ति इट शुड बी 323 एटा 323 हबो 323 मल्टीप्लाइड बाय 323 so it 323 minus 323 so it should be minus 50 323 that divided by 50 मोर पूरा भूल हो गला कैलकुलेशन गुड़ा बेले बेले स्पीड करदे हरी मोड रे बहुत भूल हो जाऊँ सुकन्या सॉरी गोटे 373 हम आरंभ रू आउटे 323 हम यहाँ आरंभ रू .477 multiplied by 4.606 multiplied by 323 multiplied by 373 divided by 50 it should be so EA is equal to 5.293 किलो कैलोरी आसला ताकू मु जदी किलो जूल रे मल्टीप्लाई करबी 4.184 मल्टीप्लाई करबी सो 5.293 मल्टीप्लाइड बाय 4.184 ना बाय 50 हबो आकांक्षा बाय 50 हबो ठीक अछि बाय 50 हबो एटा ठीक गड़बड़ी हेला भूल हेला किंतु एबे ठीक अछि so it should be 22.15 kilojoule so it should be 22.15 kilojoule केति के आंसर आछि हमरा स्मिंगर देखिबा 21.829 ठीक अछि 21.829 किलोजूल ठीक अछि सर एमसीक्यू केबे हबो स्मृति हबो टेंशन यानी स्मृति काहे केमि होचो टेंशन यानी बाबा हबो डोंट वरी होची चाली छी तो देखुचो सो इठी यस रिया वो रिया बोलो क्या बोलते हो क्या बोलना चाहते हो बोलो रिया तुम हिंदी
बोलते हो ना। ओके एठी एठी हमर आसीगला आंसर पिला में एठी ठीक ठाक अछि एटा भूल नाही तथापि म आउट थर एटा को रिपीट कर दोछि T1 होछि हमर केते T1 होछि 50 डिग्री सेल्सियस सो 323 केल्विन T2 होछि 100 डिग्री सेल्सियस सो 373 केल्विन तो आंसर जदि हम देखिबा 1.5 इन 10 पावर 7 एटा 4.5 इन 10 पावर 7 log k2 by k1 कले कटा कटी करी ऊपर 3 आसीबो तापरे माइनस a by 2.33 r रो वैल्यू आसीबो 2 ठीक अछि 1 by T2 माने 373 T1 होछि माइनस by 300 फर्दर सॉल्व कले केता आसीबो ना 1 by 373 माने 323 minus 373 so minus 50 तळे 373 into 323 4.606 एटा 0.477 so 0.477 4.603 एतिके ए सब गुडा गोटे साइड पळेबो माइनस माइनस प्लस हे जीवो ए into 50 टा by 50 हे जीवो फर्दर एटा केता हो 5.293 किलो कैलोरी 5.293 into 4.184 कले किलो जूल रे जदि जदि हमर कोन जदि कोन हेतिबो ना जदि कोनोसी कारण तमे केवल किलो जूल दरकार ताले 2 बदल रे तमे एठे पुट कर परिबो कोन 2 बदल रे 8.314 जूल पुट करिवो 8.314 पुट कले 2 बदल रे एटा जदि पुट करिवो इन टर्म्स ऑफ जूल पाइ जिवो जो माने जदि सेठी ये करछ 22.830 ठीक अछि क्वीन 22.830 भी ठीक आंसर मिलिबो 21 रो 23 जाय आंसर मिलिबो बट 23 एग्जैक्ट लिखले मार्क मिलिबोनी 21 रो 23 कारण ए भले क्वेश्चन रे वैल्यू टिके वेरी करि थाए ऑटोमेटिकली काहे ना हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू नै जाऊ 8.314 पुट कले यूनिट कोथरे आसीबो 8.314 पुट कले यूनिट हमरो जूल रे आसीबो सुकन्या जदि 2 पुट करबो यूनिट किलो कैलोरी कैलोरी रे आसीबो कैलोरी रो 22000 कले किलो कैलोरी बट किलो कैलोरी रे रखि दबो आ अधिक करबा दरकार नै 423 हबो T1 ना रिया 373 23 हबो ठीक अछि ओके सो नीतीश को दाबी पूर्ण करा जाउची 10 मिनिट्स फॉर डिनर कारण हॉस्टल रो भी किछि पिला थांदी कि कोठी थांदी तो समस्त पई समस्त खुशी पई डिनर आमे रखि दोछु एबे आ तमे माने जे जार गपिवा कथा कथाई परिबो चाहिले सो लेट मी हैव ए डिनर टाइम फॉर 10 मिनिट एमिति नंबर भी आछि कि एग्जाम रे एमिति आसेनी किंतु हुए आ कोन करबा टाइमर 10 मिनट ना okay timer is on your board अछि तबे 8 मिनिट हैला पिला माने 10 मिनिट परे 9:27 को पुनी क्लास स्टार्ट हबो स्क्रीन रे
मान उठा ए भितर मु किछि क्वेश्चन गीत गोटे गाइदिए ठीक अच्छे 7 मिनिट और रहा जाओ सब लंच डिनर करके आसो मान उठा ए भितर गीत टिके गाइदिए भल लगे समस्त को मत भी टिके भल लगे फ्रेशनेस लगे मान उदाहरण करहि कारण शरण मु तुम्भ पाद तले शरण मु तुम्भ पाद तले अनाथ नाथ नीलगिरी नाथ जगन्नाथ नाम नीलाचले महोदधि कूले कल्पवट मूले विजे करिछ बड़ देउले शरण मु तुम्भ पाद तले लक्षे जोजनरे गजडा कदेला ताडाक सुनिल पसा खेले मारकण्ड ऋषि जाउथिले भासी धई उद्धरी धैल बाम करे शरण मु तुम्भ पाद तले किस्किन्ध्याकु गल बलि विनाशिल प्रभु किस्किन्ध्याकु गल बलि विनाशिल विन्ध्य जे बान्धिल सिन्धु जले लङ्कारे रावण बधिल आपण लङ्कारे रावण बधिल आपण जनक नन्दिनी सीता छले शरण मु तुम्भ पाद तले युधिष्ठिर बोले हस्तिनाकु गल युधिष्ठिर बोले हस्तिनाकु गल भोजन कल विदुर घरे कुरु सभा तले द्रौपदी चिन्तिला प्रभु कुरु सभा तले द्रौपदी चिन्तिला कोटि वस्त्र देल अवहेले शरण मु तुम्भ पाद तले बण पोड़ी बेले घोर दाबानलु प्रभु बण पोड़ी बेले घोर दाबानलु उद्धरी रखिला ब्रजबाली कहे उपइन्द्र
कविकुला चंद्र कहे उपाइंद्र प्रभु कहे उपाइंद्र कविकुला चंद्र शरणमु तुम्भ पाद तले शरणमु तुम्भ पाद तले शरणमु तुम्भ पाद तले शरणमु तुम्भ पाद तले। वाओ केते सुंदर पद बढ़िया हरिओम कहले विभूषण विभूषण पुष्पे जकांति जान विभूषण करी कन्या कुआन। एटा बहुत सुंदर एटा कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंगर लेखा बढ़िया मु तो एते जानिनी मोर गीत तो एते भल हुएनी तथापि मैनेज कर दियो बेले बेले मते बहुत विरक्ति लागिले गीत गाइबा को लगे आ भगवान के उद्देश्य भी बेले बेले गीत गाए आ जो मैंने मते जानी से माने जानी वाराणसी पद दे आसो हरिओम तुम्हें भी गीत जानी तारे बा भंज साहित्यिक तुम्हें बहुत बड़ भंज साहित्यिक आ पिला माने टाइम हमर पाखरे 33 सेकेंड अछि जल्दी जल्दी आस सार गोटे हिंदी सॉन्ग मु हिंदी सॉन्ग हो कि बा ये हो मु केवल भजन ही गाए मते केबे बॉलीवुड बा ये केबे पसंद नहीं मु गाएनी मोर भल नहीं हो तम पई गोटे छोटिया गीत रे गाइ रहछि हिंदी भजन रे हिंदी बहुत छोटिया भजन रे मैं गिरधर के घर जाऊं टाइम हो गए अब नहीं पढ़ाऊं मैं टाइम हो गया अब पढ़ाऊं मैं। चलो 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 पढ़ते हैं चलो पढ़िबा हिंदी गीत सॉरी हिंदी गीत आउथरे केबे नेक्स्ट केबे आउटे के आ गोटे टाइम रे पढ़िबा गीत केमती लागिला समस्त को आउ के गोटे दिन हिंदी गीत गाइबा हिंदी गीत इन द सेंस मीरा बाई भजन हो सूरदास लेखा हो मत भारी भल लगे मीरा बाई भजन सूरदास लेखा बा संस्कृत गीत संस्कृत साहित्य भी किसी भजन लाइक गीत गोविंद हो गोविंद दामोदर स्तोत्र हो गजेन्द्र मुख्य स्तोत्र हो बहुत गुड़े स्तोत्र बहुत बढ़िया केवे पढ़ा शुणा हिंदी क्लास रे जॉइन करता एमती समस्ते पढ़ा गप नहीं मुझे पानी पी दिए देखो मुझे तो समझ नहीं आया सर कोई बात नहीं रिया तुम्हें समझ ना आए या ना आए तुम्हें जो संगीत का जो भाव है वो अगर समझ में आ जाए तो वो बहुत कुछ है ठीक है रिया। चलो देखो the rate constant for a fast order reaction becomes twice when the temperature rises from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Calculate the activation energy both in joule and Kelvin. तो आमे देखिबा क्वेश्चन को सॉल्व करिबा कौन डाटा रही हमर T1 रही 27 डिग्री सेल्सियस T1 is 27 degree Celsius so it is 27 degree Celsius 27 degree Celsius माने this is equal to 300 Kelvin and what is T2 is 37 degree Celsius 37 plus 273 add कले केते पाइबो this is equal to your 310 Kelvin then what we have to calculate the K1 the rate constant becomes twice so K1 is equal to K K2 is equal to 2K आसीबो MCQ एटा सर सर आसीबो डोंट वरी पप्पू आज MCQ आसीबो 10 टा जाय जहा पढिबा MCQ आसीबो मु ऑलरेडी करि कि रखि देखो सेट हे कि रहिछि आगुरु तुम देखिबो एटे सेट हे कि MCQ 31 क्वेश्चन अछि ए चैप्टर रो MCQ भी आसीबो सो डोंट वरी टिके धैर्य धर ताले हम जदी फार्मूला अप्लाई करबा ना log K2 by K1 log K2 divided by K1
is equal to 2.3 minus A divided by 2.303 R multiplied by 1 by T2 minus 1 by T1. 1 by T1. आमर ये भितर 12th कोर्स लॉन्च हो जाए 11th कोर्स भी लॉन्च हो तुम किसी सान भाई सांग साथी जी फेल हो रही कही दियो जॉइन करने ठीक अच्छे कारण वर्ष तुम पढ़ु ना बोलिकी फेल होता तो ये वर्ष पढ़ो जमी भल भाव कह आमर ऑलरेडी 12th और 11th कोर्स लॉन्च हो जाए समर कोर्स आ कौन जे फेल हो जाए पचर मूल कारण है पाठ न पढ़ा स्मृति थैंक यू वेरी मच log 2k by k log 2k by k will be cancelled out so k cancel log 2 minus a by 2.6 मु सब तुम देखुव 2 नहीं जाए मु सब 2 नहीं जाए किंतु एक्जाक्टली 2 तो नुह से 1.98 समथिंग गोटे अच्छे मुझे 2 कर दिए सब I would have a 300 minus 310 divided by 300 multiplied by 310. So log 2 means 0.3010. Don't lose your confidence, Ayush Bhartiya. Don't lose your confidence. So minus CA divided by 4.606 multiplied by 300 into 310 means 930. 3 1 3 3 3 9 1 2 3 1 2 3 आ माइनस 300 एटा माइनस 10 ए क्वेश्चन करा है ना केबे कला भाया लगुचे बे ही कला भाया लगुचे क्वेश्चन सो माइनस 10 एटी 10 कटि जीवो फर्दर ये माइनस माइनस प्लस हो जीवो ये इज इक्वल टू 0.3010 multiplied by 4.606 multiplied by 9300 हिमरश्मि कले 56.347 किलो जूल रे अच्छा 55 पॉइंट समथिंग हमर आस पारे बा 56 पॉइंट समथिंग आस पारे so it is coming out to be 12.893 kilocalorie which is equal to हमारा आसिला this is also equal to 53.946 किलो जूल ये तो तुम्हारा जोड़ा भी आसिले ठीक है ता पाखापाखि आंसर आसी पारे सो 56.347 आसला मोर केते आसला एटा 12.893 multiplied by 4.184 53.946 आसला मोर एमती केमती है अच्छा मुझे जब क्वेश्चन को मॉडिफाई करी 0.3010 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 2 बदल मु 8.314 नेली 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 3 3 3 3 3 3 9 9 9 3 0 0 9300 53.598 नहीं 53.946 आसीबो 53 पॉइंट समथिंग आसीबो 56 आसीबोनी हिमरश्मि 56 आसीबोनी 53 पॉइंट आसीबो hey Papu don't say the name of our students otherwise I will drop you from my class एमती कैलकुलेशन करिया को ही पड़ियो वाह डीजे राज अंकित बढ़िया गीतटे कले आमी केमिति हला रे डाकबाला ओके
सो 53.946 ही आसीबो चेक करो हिमरश्मि चेक करो इट शुड बी 53.946 मु चेक कली 53 पॉइंट समथिंग आसिले 54 आसिले मार्क मिलिबो 53 आसिले मार्क मिलिबो 53 54 पॉइंट समथिंग अदरवाइज नो मार्क 56 आसीबनी हिमरश्मि आउ हिमरश्मि गोटे आंसर कहिथिले गत क्लास रे मोर भूल जाई जैथिला सॉल्यूशन रे मुझे डाजी करेक्शन करे देबी ओके व्हाट डू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी गिव द रिलेशनशिप बिटवीन देम ऑलरेडी डिस्कस्ड सो इडा को आउ डिस्कस करूनी ऑलरेडी डिस्कस हे सरची से मान भीतर रिलेशन कोन नेक्स्ट कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन at 300 Kelvin gets doubled for 10 degrees Celsius rise in the temperature already कराइछि 300 Kelvin 300 Kelvin already कराइछि so already covered ए क्वेश्चन रे भी already covered already हे सारिछि तुम जो देखिबो ए क्वेश्चन दा एबे जस्ट करैली म जोडा इडा 300 310 सेम क्वेश्चन दा केल्विन रे रहिछि नेक्स्ट सरला तो तापर एमसीक्यू पढेबा द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 6.93 days find out the time taken for a given sample of that element to be reduced to 1/10 of its initial decay रिलेशन टा मने नै आकाशवाणी क्वेश्चन कोडा सुदीप तो मु जानिनी हो देखो half life t half is equal to how much 6.93 days find out the time taken for a given sample of the element to be reduced by to 1/20 of its initial activity so a minus x a into 1/10 आज इनऑर्गेनिक हे परबनी गेली ना आसंता काली ही हबो कारण आज आउरी एमसीक्यू अछि so a minus x is equal to a by 10 reduced to माने एतिकी बळिबो so a minus x is equal to a into 1 by 10 can be reduced कहिछि माने एतिकी बळिबो ठीक अछि एतिकी बळिबो so a minus x is equal to a multiplied by 1 by 10 एदरु एमसीक्यू सरेबी सुकन्या या पर लॉन्ग क्वेश्चन अछि लॉन्ग क्वेश्चन पर एमसीक्यू सरेबी तापरे सॉल्व कले कोन हबो फाइंड आउट द टाइम केते पचराइ छै सो t इज इक्वल टू हाउ मच पचराइ छै मन रखो जेतु एठे a by 10 अछि हमको एठे सॉल्व करियो पड़ियो कोन हम ना k इज इक्वल टू 2.303 by t half t log a by a minus x k जगह हम वैल्यू पुट करि परिबा 0.693 by t half 0.693 माने 2.303 multiplied by 0.3010 divided by t half होले केते हमरो t half रो वैल्यू रही छी 0.693 तो एटा को 0.693 by 6.93 कर दो 0.693 divided by 6.93 कर दो राजेश कह देलेनी 23.1 days वाओ 2.303 divided by t log a by a minus x a by 10 so by 10 कटि जीवो log a हे जीवो एटा 693 कटले 0.01 एटा कोन जीवो 0.001 multiplied by 1 by 100 so 1 by 100 into 100 होले केता हबो into 100 होले 0.1 हे जीवो so it should be 0.1 ताले 2.303 divided by t 10 टा जाए क्लास अब आयुष log a by 10 कारण a will be cancelled out log 10 is 1 so 0.1 is equal to 2.303 multiplied by t so t is equal to how much t is equal to 2.303 divided by 10 sorry 0.1 this is equal to 23.03 days ओके ए बडा क्वेश्चन को सॉल्व करिवो बुझियला एटा ना कार को डाउट होला सो इट शुड बी 23.03 days इंडिया वोन अच्छा रे बच्चे बहुत बढ़िया कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू
मिस्टर शुभम सावधान। 23.2 आसिला क्वेश्चन आसिली ओके ठीक अच्छे चलो। आयुष भारती कहले 23.1 ठीक अच्छे कैलकुलेशन वाइज 23 डेज आसिले हला। ओके समस्ते विन हम 23 पॉइंट आउ थे कही दूसरी टी हाफ हो 6.93 डेज ए माइनस एक्स हो तुम ए बै 10 टी आमको के पचराई ताले के इज इक्वल टू 2.303 बै टी लॉग ए डिवाइडेड बै ए माइनस एक्स ताले के रो वैल्यू आम जानचे 0.693 बै टी हाफ 0.693 डिवाइडेड बै टी हाफ 0.693 डिवाइडेड बै टी हाफ तो सॉल्व कले इटा को आसीबो 0.693 by 6.93 कले 0.1 आसीबो तापर 2.303 डिवाइडेड बाय t log a by a minus x होची a by 10 सो इटा log 10 हे जीवो log 10 रो वैल्यू होची 1 2.303 by t ताले इटा केते हबो ना ताले फर्दर सॉल्व कले इटा आसीबो ना t is equal to 2.303 divided by 0.1 that is 23.03 this clear बुझेला। एडी हमरो 2-3 मार्क सेक्शन सरीला पेला माने ए चैप्टर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन में देखिबा सो दीज आर द इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन दीज आर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ए चैप्टर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ए दीटा ही रखाइछि ए चैप्टर व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक अछि and explain with an example एटा देखा जाउन बोले explain with an example सहित explain करिया को कहिछि 2.303 then derive the rate constant for a zero order reaction what is the unit of rate constant derive the expression for half life of a zero order reaction already हमें सब गुडा को डिटेल्स रे डिस्कस करि सारछे तुम जदी कहबो डिराइव करबी अदरवाइज आई विल स्किप द लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट Do you want the derivation part or I will skip the part? Do you want the derivation part or I will skip the part? Tell me. Already we have discussed in the earlier classes. Similar to your first, I already a question कराई कल first order भी से बड़ा कराई derive the expression for rate constant. Derive the expression for rate constant for first order reaction. Derive the expression for half life. Explain the graph of log a minus x versus t. Calculate the time taken for 75% completion of a fast order reaction if the half life of the reaction is 30 minutes. So already এটা discuss ହେଇ ସାରିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ already derive ହେଇ ସାରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଜିରୋ ଅର୍ଡରରେ କେତେଟା 24 ରେ ପଡ଼ିବ କୋଉଟା 24 ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଆଉ ଜିରୋ ଅର୍ଡରରେ ନଥିଙ୍ଗ କୋଉଟା ବି 24 ରେ पड़िनी से कोने 24 रे अन्य रो ये क्वेश्चन आस्तिला कैनेटिक्स रो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो एठी हमर जो देखिबा 95% होची फास्ट ऑर्डर ठीक अछि फास्ट ऑर्डर पय 95% होची तो एठी हमर एमसीक्यू सेक्शन सरला एमसी सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन को केवल कहि देली लॉन्ग क्वेश्चन को कहि दोच तथापि मु लॉन्ग क्वेश्चन रो एक्सप्रेशन और ग्राफ टा कर दोच जीरो ऑर्डर पाई फॉर जीरो ऑर्डर मन रखो जीरो ऑर्डर रो जदि हम देखिबा जीरो ऑर्डर पाई k नॉट इज इक्वल टू केते आसबो x by t यूनिट कोन हो यूनिट ऑफ k नॉट होची मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट ऑफ k नॉट आउ कोन रहिची आउ तार जदि हम देखिबा हाफ लाइफ रो वॉइस लो अछि यूनिट ऑफ k नॉट आउ कोन रहिची आउ तार जदि हम देखिबा पूरा वॉइस झकाझक वॉइस अछि कोन वॉइस सॉरी हाफ लाइफ देखिबा हाफ लाइफ होची टी हाफ इज इक्वल टू कोन हबो ना a by 2 k naught is t half this is the expression for half life a by 2 k naught then for fast order already fast order रो जदि हम देखिबा k1 is equal to कोन हबो ना 2.303 by t log a by a minus x already डा कराई छी तुम माने देखिबो
यूनिट होची कौन यूनिट होची सेकंड इनवर्स यूनिट इज सेकंड इनवर्स एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑलरेडी यूज करी करी हमें पूरा पागल हेलुनी 0.693 बाय के ग्राफ टा बते दूची राइट ग्राफ कहिची log a - x वर्सेस t log a - x वर्सेस t हमको ग्राफ देखियार अछि सो log a - x वर्सेस t एडू मु जाउची जीबी ए ग्राफ टा करूची so k1 is equal to this one ताले 2.303 by t ताले एटा कोन हबम ना k1 multiplied by t is equal to 2.303 log a by a minus x a by a minus x ताले k1t divided by 2.303 is equal to log a by a minus x log a by a minus x अच्छा पिला माने इटा हमरो कहा वर्सेस कहा ग्राफ को आइची ना log a minus x versus t को आइची log a minus x versus t जदि को आइ थंदा log a by a minus x versus t एटा बडे ग्राफ ही थंदा पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन जदि एटा रो ग्राफ को आइ थंदा कोन ही थंदा एटा पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन ही थंदा ए भलिया ग्राफ ही थंदा जदि पर्टिकुलरली log a by a minus x versus t को आइ थंदा किंतु हमरो को आइची log a minus x versus t log a minus x versus t तो k1t by 2.303 log a by a minus x कौन करिवो एटा हमर ओडे फार्मूला अछि log a divided by b is equal to log a minus log b ए फार्मूला को अप्लाई करिवो अप्लाई करले कौन हबो log a minus log a minus x बर्तमान log a minus x को लेफ्ट साइड को नबा आ k1t को राइट साइड को ताको टाणी उतारी की बाहर करबा ताले राइट साइड को टाणी उतारी की बाहर कर का k1t को आ लेफ्ट साइड को log a minus x को आनी दियो लेफ्ट साइड को log a minus x पळे आसिला राइट साइड को का करला minus k1 divided by 2.303 by into t plus log a पिला माने सेम आगो हमें जो ग्राफ टा देखुतले सेही भलिया ग्राफ अछि देखो इठे स्लोप रे अछि y is equal to mx plus c फॉर्मेट रे अछि देखो y is equal to mx plus c y होची तुम्हारा log a minus x आ x होची t plus c होची y इंटरसेप्ट होची log a आ जदि हमें एठी पर्टिकुलरली देखिबा स्लोप टा हमर कोन होची नेगेटिव होची ताले ग्राफ टा कोन हो डिकेइंग हो ग्राफ टा डिकेइंग हो स्लोप पॉजिटिव थिले ग्राफ टा इंक्रीजिंग हो नलेटा डिक्रीजिंग हो सो m is equal to how much minus k1 divided by 2.303 and what is c y intercept is log a ताले फार्मूला अनुसार कौन हबो रे डिक्लाइन हबो log a minus x versus t ग्राफ नबा प्लीज ग्राफ बताइए बताता हूँ रिया बताता हूँ देखो देखो कैसे होता है देखो ना तो क्या होता है यहाँ पर ना log a minus x है सो ये ग्राफ डिक्रीज होगा क्यों डिक्रीज होगा क्योंकि ना ये नेगेटिव में आया है क्या नेगेटिव में आया है ये तुम्हारा जो -k1 ये ग्राफ जो है ये ग्राफ का स्लोप जो है m वाला वो नेगेटिव में आया है ये नेगेटिव में जो आया तो इसीलिए वो क्या हुआ इसीलिए ग्राफ का एक्सप्रेशन डिकेइंग आ गया ठीक है डिकेइंग हो गया ओके देन ये क्या होगा फिर ये नहीं मोह से पेट पाटुची सो ये डीके होता है डीके होने के कारण इसका स्लोप जो है नेगेटिव में आया इसलिए इसका ये ग्राफ का नेचर डिकेइंग आएगा ठीक है तो इसका स्लोप कितना आएगा स्लोप का वैल्यू आएगा -k1 डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई बस इतना ही होगा और उसका y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना होगा y इंटरसेप्ट का वैल्यू log a होगा ठीक है यस एग्जैक्टली दिस इज आरएनएस इक्वेशन बढ़िया सिद्धार्थ कुमार साहब बहुत भला okay is it clear to everyone or do you have any doubt still is it clear to everyone or do you have any doubt still okay मेरसाई हिंदी जीव हाँ गुरुचरण मेरसाई ओडिया रो मेरसाई हिंदी जीव
ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ହିନ୍ଦୀ କହିବି। ଗ୍ରାଫ पेपर नबा ग्राफ पेपर दरकार नहीं। ये जो लाइन टा कौन टच करबनी कि एक्स को एक्स एक्सिस रे टच करिवो इन द सेंस टी इज इक्वल टू जेतले इनफाइनाइट हबो सेतले एक्स एक्सिस रे टच करिवो बोली किछि कहि होबनी काहे कि ना डिकेइंग होछि सत किंतु को टाइम रे यार वैल्यूटा 0 हबो एक्जेक्टली कहि होबनी तेनु सेति पय एटा हम टच करनो कले भी हबो ठीक है सुकन्या टच करे भी हबो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन हमारा द यूनिट ऑफ बहुत सुंदर क्वेश्चन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अरे 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 फास्ट ऑर्डर नहीं जीरो ऑर्डर नहीं आप तो जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर बताए लेकिन सेकेंड ऑर्डर इसके अंदर कहाँ से आ गया। हम क्या करेंगे सर क्या करेंगे अब सेकेंड ऑर्डर कहाँ से ले आए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन क्लियर करो क्या। सिद्धार्थ कुमार साहू डाउट क्लियर करूँ क्या श्योर। सो ये क्वेश्चन रो जदि हम देखिबा पिला माने फार्मूला मन रखता जे फॉर ए nth ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द फार्मूला गोटे nth ऑर्डर रिएक्शन पई फार्मूला कहि कहि मु थकी जाईची किंतु एमसीक्यू रे जेतो अप्लाई होची तेनु एबे कहि रखची ना मोल लीटर इनवर्स रो पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स रो पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स जदि जीरो ऑर्डर हेतिबो एन जगह 0 पुट करियो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स फास्ट ऑर्डर हेतिबो एन जगह 1 पुट करियो सेकंड इनवर्स सेकंड ऑर्डर हेतिबो एन जगह 2 पुट करियो ताले कोन हबो एन जगह 2 पुट करले मोल लीटर इनवर्स रो पावर 1 minus 2 means minus 1 second inverse that is केता आसीबो मोल लीटर इन मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स सो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स ऑप्शन ए। ठंडा हेनी सिद्धांत कुमार साहू सिद्धार्थ ठंडा हेनी ठंडा हे जिवार संभावना अछि। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू कंप्लीशन कोथिरे जल्दी रिएक्शन रे माने तुम्हारा कंप्लीट होबा को जाउछि। आकाश बाणीला ऑर्डर रे एमसीक्यू पचारिबो कि निश्चय 2 नंबर कोड आब आंसर को कोठी बहुत कोठी रेट कांस्टेंट जोडी हाईएस्ट हो सीडी रिएक्शन फास्ट हो कि जोडी रेट कांस्टेंट कम हो सीडी रिएक्शन दा फास्ट हो। एक्जाक्टली हिमरश्मि तुम्हें ठीक कहल जे ग्राफ रे स्लोप रे आमे y एक्सिस रे थिबा log a - x को जेतेबेले 0 नबा तार वैल्यू जेतेबेले 0 आसीबो सेतेबेले सो log a - x 0 होची माने a - x हमर कोन हे जाउची 1 होची कारण log 1 0 होची आ a - x 1 होची माने सेतेबेले रिलेशनशिप आसीबो x = केते x विल बी a minus x is equal to 1 तो x is equal to a minus 1 x is equal to a minus 1 जेतोल हबो। बहुत बढ़िया पॉइंट कहलो मु एटे पॉइंट टा बाहर कर दोछि बहुत सुंदर पॉइंट एटा ओटे एंट्रेंस लेवल रो क्वेश्चन। सो ए पॉइंट टा हमर आसीबो कोन ए पॉइंट टा केतोल हबो ना द टाइम माने log रो एटे log रो वैल्यू आसीबो log a minus x रो वैल्यू आसीबो a minus 1 सो एटा log 1 आसीबो। सो ए केस रे x is equal to हमारा आसीबो केते एट द केस ए केस रे x is equal to remember x is equal to a minus 1 हो कारण a minus x equal to 1 बढ़िया। केमिस्ट्री 3 टू मार्क इंपोर्टेंट निहाती जस्मिन नहले केमथि होतंदा सो एठी जदि हम देखिबा के जते हाई हबो सते रिएक्शन फास्टर हबो तेनु ए ऑप्शन हबो ठीक उत्तर। नीतीश ठीक उत्तर दैछंती हिमरश्मि भी ठीक उत्तर दैछंती अन्य क्वेश्चन को जिबा द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर ए फास्टर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द डेज concentration of the reactant concentration of the product time temperature तो गोटे रेट कांस्टेंट ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा ऊपर डिपेंड करथाय फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रो रेट ता कहा ऊपर डिपेंड करथाय
specific rate, not exact rate constant. Specific rate constant और exact rate constant दीटा अलगा. Specific rate constant और exact rate constant दीटा अलगा. Specific rate constant and exact rate constant अलगा. Specific rate constant means rate constant at a particular temperature. तो जी भी हेले कहबा जे सर आमे तो जानिछु जे k is equal to 2.303 divided by t log a by a minus x एटा होची रेट कांस्टेंट रो फार्मूला किंतु दिस इज नॉट द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन सो एटा जी भी हेले देखिले कहबा जे सर एटा कोन हबा ना टाइम ऊपर डिपेंड करिवो के कहबा सर आमे तो जानिछु अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of the reaction is directly proportional to concentration of the reactant. But remember, we know that specific rate constant of a fast order reaction depends upon basically on temperature. Temperature ऊपर depend करता है specific rate constant. तो temperature to temperature vary करता है specific rate constant. किंतु एगुड़ाकर value temperature ऊपर depend करी न था यही rate constant. एटा होची overall rate constant. एटी तुम्हें temperature कोडी देखुछ तो एटा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट नुह ठीक अछि सो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर रिमेंबर ए क्वेश्चन क्वाइट डिफिकल्ट लेवल रो माने क्वाइट माने लागुची हमको सो जेंदी इजी लागुची किन देखिला आडको एटा टिके डिफिकल्ट अछि मॉडिफाइड अछि क्वेश्चन नेक्स्ट half life of any fast order reaction is this directly proportional to the initial concentration directly proportional to the initial that directly proportional to the initial concentration of reactant half of the rate constant same for all reaction independent of initial concentration of reactant फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रो हाफ लाइफ टा को ऊपर डिपेंड करूची बा डिपेंड करूनी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करूची ना हाफ लाइफ रो फार्मूला जो देखिबा t half is equal to 0.693 by k so it does not depend upon initial concentration half of the rate constant ऊपर डिपेंड करेनी half of the rate constant के भी होबनी सेम फॉर ऑल रिएक्शन होबनी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हां इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करे नाही तेनु 4 रा आंसर होबो ऑप्शन नंबर डी बुझिला 4 रा आंसर होबो ऑप्शन नंबर डी ए क्वेश्चन टा टिके मीडियम लेवल रो मॉडरेट क्वेश्चन नेक्स्ट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन RCI plus NaOH gives rise to RCl plus NaOH gives rise to ROH plus NaCl and the rate is equal to K1 into RCl the rate of the reaction will be doubled on doubling the concentration of NaOH halved on reducing the concentration of alkyl halide to 1/2 increased on increasing the temperature of the reaction unaffected by increasing the temperature of the reaction कोउटा हबो सटीक उत्तर ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି चित्तरंजन करे सी हबो एवं हनीफ सुकन्या डी हिमरश्मि सी टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर बढ़िले किंतु रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ी थाए फास्ट ऑर्डर रे ठीक अछि इंक्रीज हेता है कि इंक्रीज हे न थाए इंक्रीज हबो कि न हबो इंक्रीज हे थाए साधारणतः किंतु केते मात्रा रे इंक्रीज हबो सेटा कोड जणा पड़े टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो आ टेम्परेचर जदि हमें बढ़ी थाउ से इंक्रीज हबो बाध्य हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू हाफ अल्काइल हैलाइड को हाफ रो आउ NaOH सहित इंडिपेंडेंट कारण एटी रेट रे NaOH पार्ट नाही तेनु NaOH सहित इंडिपेंडेंट राइट जेहेतु NaOH सहित इंडिपेंडेंट तेनु ऑप्शन ए हबो नाही आ ऑप्शन बी हबार चांसेस रहिछि केमदी ना हाफ on reducing the concentration of alkyl halide to 1/2
अल्काइल हैलाइड रो कंसंट्रेशन 1/2 को जेतोळे आमे रिड्यूस करे देले ए क्वेश्चन रे किंतु ए ऑप्शन टा को ठीक गड़बड़ एथि पय लागुची कारण 1/2 अछि टू हाफ बोली कि लिखा हैतंदा टू 1/2 तेणु ए ऑप्शन टा ए क्वेश्चन टा ग्रामेटिकली ऑप्शन टा भूल थिला बोली लागे तथापि ए बी ऑप्शन टा भी हेला होली चांसेस रहिछि किंतु ए भलिया क्वेश्चन जेतोळे बोर्ड रे आसे सेतोळे ग्रेस मार्क मिलिबो कारण एटा दीटा ऑप्शन अछि बी और सी half on reducing the concentration of alkyl halide to 1/2 माने गोटे हाफ 2 हाफ means 2 halves 3 halves 4 halves ए भलिया रिथंदा to 1/2 माने half 1/2 माने not 3/2 it is गोटे हाफ माने हाफ ओनली सो एटा ऑप्शन बी भी हे परिबो बट इट द ऑप्शन बी रो माने कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन तो ए भलिया क्वेश्चन रे तुमको जोटा सठिक लागुची सेटा गोटे करिके आसीबो और ग्रेस मिलिबो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आयोडीन आफ्टर लेफ्ट आफ्टर 50 minutes and t half is 25 minutes हम फार्मूला अप्लाई करबा फार्मूला अप्लाई करो पुट द फार्मूला कोन थिला ना t half is equal to ना a by a minus x to the power n sorry t by t half is equal to n and a minus x a by a minus is equal to 2 to the power n t होची हमारा 50 t half होची 25 so 50 by 25 is equal to 2 which is equal to 2 to the power n ताले n is equal to 1 n is equal to 1 आसीगला n is equal to 2 आसीला sorry this is equal to n is equal to 2 n is equal to 2 आसीला sorry n is equal to 2 आसीला ए क्वेश्चन दा तापरे a by a minus x तमे कोन घोसी देइछो कि पिला माने आंसर न करी कि कहि दोछ a by a minus x a divided by a minus x is equal to 2 to the power 2 माने 2 to the power 4 so a minus x by a केता हो 1 by 4 हो a by a minus x by a 1 by 4 हो so it have 1/4 option number b it should be option number b option number b is the right answer चिरंजीव सिलेक्टेड क्वेश्चन तो अभी जाए करा होची तमे कोन देखुछ बाबा आ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखु न कि अभी जाए तो सिलेक्टेड क्वेश्चन करी करी कि दिन जाउची ये कहूची सिलेक्टेड क्वेश्चन आ कोनटा करा होची सिलेक्टेड क्वेश्चन कराउनी आ कोनटा कराउची आ नी कुआड को दुनिया रे अच्छो चिरंजीव हां सात 75% of a fast order reaction was completed in 32 minutes 50% will be completed in half अधारे कमिबो तार अधारे कमी जियो अधा कारण आम जानिछे पढ़िले t75% is equal to 2 into t half ए कि समय आगु हम एटा प्रूफ करथिले 2 into t half हम कि समय आगु एटा प्रूफ करथिले ताले t75% केते t75% इज 32 मिनिट ताले 2 into t half सो t half होची तार अधा 32 रो अधा होची 16 मिनिट सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट a large increase the rate of the reaction a large increase in the rate of reaction for a small rise in temperature is due to this rate of reaction हमारा large जेतोले बढ़ी जाए for a small rise in temperature is due to this temperature सामान्य बढ़िला परे भी रेट ऑफ रिएक्शन लार्ज मात्रा रे अधिक मात्रा रे बढ़ी जाय था ड्यू टू दिस सामान्य टेम्परेचर बढ़ेले कि बढ़ेबा द्वारा कोन हला रेट ऑफ रिएक्शन रो वैल्यू लार्ज वैल्यू बढ़ गेला साहिल अच्छा साहिल कहले आपण 2 मार्क क्वेश्चन गोटे करैथिले 50% सेटा 16 मिनिट हुए बोली कि अच्छा तो एटा कोन हबो ऑप्शन रे रहिछि जदि हमर ऑप्शन रे जदि हम देखिबा इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन तापरे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी शॉर्टनिंग ऑफ द मीन फ्री पाथ तो सामान्य टिके टेम्परेचर बढ़ी जिवा द्वारा हमर कोन हुए नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज हुए नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हमर इंक्रीज होगा लगे सो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट्स टू इंक्रीज होगा लगे आयुष कौन पचार न
सो ऑप्शन नंबर बी हम फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन del H represent the enthalpy of the reaction in kilojoule per mole. The minimum value for energy of activation will be this. So एंडोथर्मिक रिएक्शन होची del H एटा बहुत बढ़िया एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में पढ़े छी del H represent the enthalpy of reaction in kilojoule per mole. एमसीक्यू 27 टा अछि हम 10 टा करी आज रखी दबा अमिय मु रुहे जटणी भुवनेश्वर पाखरे आईआईटी भुवनेश्वर पीएचडी करुछि सो del H जदि रहउछि एंडोथर्मिक रिएक्शन पई ताले एक्टिवेशन एनर्जी टा कोन हबाउ पड़िबो एक्टिवेशन एनर्जी रा del H रु कम हबो ना इक्वल हबो ना मोर हबो ना जीरो हबो कोन हबो del H रो वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी जाथियो सो del H रो वैल्यू कोन हबो आज दीदी का मैरिज अच्छा सो del H रो वैल्यू एंडोथर्मिक रिएक्शन रही एंडोथर्मिक रिएक्शन पई एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी बा एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी exactly same exactly it should be same so activation energy should be exactly the same del H should be equal to del H. Last question number 10 को जीवा the half life of a radioactive element is 1580 the half life of a radioactive element is 1580 years. How long will it take to reduce to 1/4 of its original mass? So half life देची t half देची हमरो 1580 years 1580 years 1/4 हबा को केते टाइम लागियो कहैछि ता माने a - x होची 1/4 of a माने a/4 ताले a/a - x केते हबो a/a - x हबो 4 राइट a - x होची a/4 ताले a divided by a - x केते हबो a divided by a/4 so which is equal to 4 this is equal to 2 to the power 2 ताले n factor आसी गेला हमरो 2 n factor 2 हे गेले t by t half is equal to हम पढ़छे n ताले t is equal to केते हबो ना n into t half n माने होचे हमरो 2 multiplied by t half केते 1580 सो 1580 रो 2 गुना 3160 ए हबो आंसर बुझियोची 10 नंबर जे आज रो क्लास को रखिबा 11 नंबर तो हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा 11 नंबर तो क्वेश्चन हमें डिस्कस करबा नेक्स्ट क्लास रे ठीक अछि 9 नंबर ता लेस देन हबनी नो 9 नंबर ता इक्वल टू हबो del H जति की एंडोथर्मिक रिएक्शन जति की del H रो माने एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू दैट एग्जैक्टली इक्वल हबा को पड़िबो नहाला हला चलो मुझे भजन गाइबी भगवान को शुएबी सेवा करी ठाकुर करी मोर भी शोले सका को पुणी आउे क्लास तुम जल्दी शोले सका पुणी जल्दी क्लास करी सका को डीएफ तापाई प्रिपेयर हेबी पुणी मोर काम बहुत गुड़ा अच्छे थैंक यू 2-3 मार्क क्वेश्चन आउट दिखाई 2-3 मार्क ग्राफ प्लीज ड्रॉ कर दिंतु को ग्राफ टा कोच हिमरश्मि एंडोथर्मिक रो काली कह मत भारी ये लगे एंडोथर्मिक रो एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट करी ग्राफ टा कह काली मुझे जाननी ग्राफ देखी कह एग्जैक्टली काली कह ठीक अच्छे रश्मि आसंता काली मॉर्निंग रे कह मन पकईदेव काली जस्मिन इनऑर्गेनिक होनी डोंट वरी इनऑर्गेनिक करूँ ना आमे अच्छू आमे माने अच्छू मेटसाई ओडिया अच्छी
ओके थैंक यू फॉर योर विशेस ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू गुड नाइट हैव ए वंडरफुल नाइट काली मॉर्निंग 6टा बेले सकाल 6टा 7टा बेले नहीं सकाल 6टा मोर 9टा भितर पहुँचे पड़ो आईआईटी 9:30 आमर ग्रुप मीटिंग अच्छी 10टा बेले मोर प्रेजेंटेशन अच्छी आसंता काली पुणी थे चिंता कर तेणु टाइम हेनी आसंता काली पुणी 10टा बेले ग्रुप प्रेजेंटेशन 10टा न 10:30 हो आम सार 10:30 हो तथापि 9टा भितर सारे पड़ो सो 6 ରୁ 9 देवव्रत ओझा तुम कुआडे जाइथिलो 2-3 मार्क एबे जाय करा होतिला परा ओके थैंक यू चलो गुड नाइट।